सॉरी। सो हाय एवरीवन, जैसे हम MLP अपनी सीरीज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस की। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ MLP कोर्स in this machine learning series and machine learning sessions, and today we are having our last session, which is basically NTEM revision session. And today we will cover um, 3 PYQs minimum. We will mainly do PYQ Marathon. And thanks to Nandan Reddy for like giving us the combined PYQs. And also this session is collaborated. In fact, all the sessions are collaborated with GIR House. So thanks to Vignesh for collaborating with me. And let's start. And like recording this session, I'll upload the recording in my YouTube channel, so you guys can subscribe to it. Okay. And just before starting, okay, एक mock भी है and marathon. So mock करना है anthem mock, yeah, what do you guys suggest? Should we directly go for the PYQs? मॉक PYQ का बेटर होगा। क्वेश्चन PYQ से है। Okay, तो फिर PYQs ही करते हैं अगर क्वेश्चन PYQs है तो। All right, so इससे स्टार्ट करते हैं and let me label it. Okay. एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग कुछ कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स थोड़े से हाफ होंगे, लाइक मतलब करेक्ट आंसर्स हैं बट देखा जाए डिटेल में लाइक दे आर नॉट दैट मच करेक्ट द स्टेटमेंट्स एंड ऑल। सो जस्ट लाइक काइंड ऑफ अ वार्निंग कि MLP कोर्स है, ऐसे ही होता है। सो बस ये मान के चल लो। सो दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं फिर। सेलेक्ट मल्टी लेवल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ओके, ऊपर से कर लेते हैं, दैट इज मच Actually, you can open this PDF twice. एक side में बेटर। you can have the Oh yes, that would be much better. So let me just search this question ID. Okay, ये वाले नहीं है। Okay, so yes, we have these questions and here we have the answers. Okay, so the first question, multi-level multi-class classification, and options are okay. Is this MCQ or what? MCQ. So there is a collection of photographs. Each photograph can have multiple animals. Okay, cat, dogs, birds. So we have to predict, indicate, your model should indicate all animals which are present. From appropriate weather data, your model must provide average temperature and average humidity. All right. Predicting expected price of a second-hand car with appropriate features. So ये लास्ट वाला ऑप्शन तो हो गया, इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट क्लासिफिकेशन. सेम फॉर दिस, इट इज़ ऑल्सो रिग्रेशन प्रॉब्लम and multi-level regression. We can say this is multi-class problem, and your model should indicate all the animals which are present. I think this is multi-level multi-class if I'm not wrong. Okay, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एक अलग से उस पर खोल लेता हूँ. I don't want to say. No, just copy the question ID and search it, and you can come back with the arrows. Yes, no, just like interact करते करते I don't want ऐसे कुछ लगे अजीब सा. Okay. So ऐसे रख लेते हैं. Okay. So इसका आंसर तो यही होगा, ये ऑप्शन, multi-level yes, multi-class. Yes. yes. Okay. Now next, which of the following option is the correct method to shuffle training data after each epoch? So epoch is a iteration. Okay, epoch कह लो, iteration कह लो, both are same. So shuffle, okay, shuffle per epoch I don't think ऐसा कोई attribute parameter है. Shuffle equals to true is the parameter, right? And this is something else. यहाँ पे हम learning rate set कर रहे हैं, and none of these तो नहीं. A is the correct option. I check. Yes, A is the correct option. Now this, which of the following can be Can used? you actually explain क्यों?
ओके in this question. ओके शफल पर इपॉक तो कोई वो है नहीं, पैरामीटर ही नहीं है इन द एसजीडी रिग्रेसर. शफल इक्वल्स टू ट्रू इज द पैरामीटर देयर. सो हर एक आइट्रेशन के बाद डेटा सेट जस्ट टू लाइक शफल द डेटा सेट सो दैट वी कैन लाइक मेंटेन द काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है. सो ये कुछ सैम्पल्स लेता है लाइक इवन इफ वी सेट सम बैच साइज एंड ऑल. सो उसके बेस पे वी वांट कि पूरा यूनिवर्सल होल डेटा सेट जो हम ट्रेनिंग डेटा सेट पास कर रहे हैं उसको पूरे को कंसिडर करें. सो इट्स बेटर इफ वी सेट शफल इक्वल्स टू ट्रू. एंड आई थिंक बाय डिफॉल्ट ऑल्सो शफल इज ट्रू if I am not wrong. Yeah. Yes. One more thing, uh, import statement से भी सेम नहीं लगता है कि पहला वाला सही होना चाहिए? Import statement, oh yes, import मैंने देखा नहीं. Linear model, all the like models, कोई भी model pre processing में तो है नहीं. Pre processing pipeline and the other things, models जो हैं like वो model के name पे ही हैं kind of. जो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसजीडी रिग्रेसर, एसजीडी क्लासीफायर है वो सारे लीनियर मॉडल में आते हैं. ट्री वाले मॉडल्स वो सारे उसमें आते हैं इन द ट्री एपीआई एंड सिमिलरली ensemble and svc. Okay, so next question, which of the following can be used to compute training error after each iteration? Okay, so ट्रेनिंग एरर हमें हर एक आइट्रेशन के बाद कंप्यूट करना है. लाइक मॉडल में ऐसा कुछ पैरामीटर नहीं होता कि जिससे वी कैन गेट द लाइक इन एसजीडी रिग्रेसर मेनली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैरामीटर जिससे वी कैन गेट द ट्रेनिंग एरर आफ्टर ईच आइट्रेशन. डायरेक्टली वी हैव टू लाइक कंप्यूट इट कि मॉडल डिफाइन कर दिया एंड देन वी हैव टू डू मॉडल डॉट फिट और पार्शियल फिट एंड आफ्टर दैट हर एक की prediction से और by using score method we can get the training error. So उसके लिए like what we do is they are asking like after each iteration. So after each iteration it means like we have to set warm start equals to true. So what warm start will do is it will like consider, जैसे मान लो मैंने ओके मैक्स आइटर भी मैंने 1 रख दिया, मैक्स आइटर 1 एंड वार्म स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू. इट मीन्स वेन एवर आई कॉल मॉडल डॉट फिट तो एक आइट्रेशन ही होगी एंड एक आइट्रेशन पे जो भी कोएफिशिएंट्स एंड इंटरसेप्ट अपडेट होंगे based upon that our model will be made. So if we have to do like if we have to compute the training error for 10 iterations then हम एक loop में run कर सकते हैं model dot fit 10 times and we can compute the error. So the first option is correct, the second is not correct because max iteration is 2. We want after each iteration. Third option we have like in third and fourth we have max iteration as same, but we have warm start as false. So warm start should be true because it maintains the like it handles the coefficients and intercept. So yes, A is the correct answer. If I check yes. All right. Now next for the given code, how which you use, how many models will get trained? Okay, what will be the length of scores? All right. So Crosswell score gives us like the an array of scores जितने भी हमारे estimators बने हैं and that like that array of scores, so array की length उतनी होगी जितनी हमारी क्रॉस वैलिडेशन हमने सेट करे हैं पैरामीटर. सो CV इज द पैरामीटर है, एस्टिमेटर बाकी सारे कोड को लाइक नो नीड टू चेक, वी लाइक डायरेक्टली हम कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई एरर का ऑप्शन दिया हो. सो यहाँ पे सैम्पल्स वी हैव 1024 एंड द CV which we are using technique by default CV technique is stratified k fold. So stratified k fold में we अगर if we don't pass anything it will by default take 5. If we pass anything तो it will consider that k parameter for that stratified k fold, like if we pass any integer, but यहाँ पे we are passing leave one out. So leave one out, what leave one out do is जैसे 1024 samples हैं, it will consider 1023 samples for training and one extra sample for okay the last one sample for validation. Okay, same way it will happen for
all the training samples. So that means the length of the score will be 1024, and that is the like correct answer. Yes. So what is the purpose of k-fold cross validation? Okay, to split data. Okay, not to split data exactly, to tune parameters, hyperparameters, no, to evaluate model performance on multiple subsets. So this is the correct option. ये तो I hope सबको पता ही होगा, बहुत basic. Then fit method in scikit-learn helps in learning the parameters of any classifier or regressor. Make sure कि like आप लोग ये word अच्छे से देख रहे हो. अगर कोई प्री प्रोसेसर या ट्रांसफॉर्मर लिखा हो ना, that is different. Classifier and regressor, if they are like if they have written, that means they are talking about a model, machine learning model. So machine learning, like in scikit-learn we have fit method for any ML model, right? But we don't have any kind of transform method. So statement 2 is like transform method in scikit-learn is utilized to apply a transforming function and convert the feature matrix after fitting the classifier or regressor. Well, classifier or regressor, these are machine learning like basically they are referring to ML models. So in ML models we don't have any kind of transform method. We do not do any kind of transformation. We just directly train our model using fit method. So statement 1 is true, second is false. Okay, very basic. Which assumption that does naive bias makes about the features? Okay, they are independent of each other. They are always a numerical representation of the text data. They are linearly related. They are categorical. Okay, so we have like multiple variations of naive bias: categorical, naive bias, binomial, binomial, I guess, yes, and complement NB, and like we have 4 or 5 variations. Okay, so like each variation is for different kind of data. If we have unbalanced data set, we use complement NB, and similarly we have others as well. For categorical we have categorical NB, categorical naive bias. So this option is not correct. They are linearly related. No, naive bias is like based upon bias Bayes theorem. Bayes theorem. In Bayes theorem we like consider both the variables like a and b, both the random variables are independent of each other. So same here, using like naive bias, what we do is we predict the output, we predict the target label based upon like the features, and by like computing the probability on them. Okay, by taking the features and using Bayes theorem, we compute the probability of like each of the respective target label, whatever we get. So the option A is correct. Like they should be independent of each other, which is the basic rule mainly for Bayes theorem. And in this question, um, given the following code snippet that preprocess a dataset with both continuous and categorical features using sklearn.preprocessing, processing, what will be the first row of the X transform? Okay, so we are like here they are transforming the dataset using some preprocessor. So we have one hot encoder, min-max scaler, and standard scaler, and column transformer. And they are asking what will be the first row. Okay, so we have a column transformer, and in column transformer we are like we are having 3 different transformers which will work in like for three, like which will work independently. Okay, so min max scaler will work on the first one of 0th feature. Okay, 0th column. Then categorical one hot encoder works on first feature, and standard scaler works on again 0th feature, uh, which is 0th first column. So basically they are asking about the what will be the first row. So in first row, min max scaler. So min max scaler is directly like the formula of min max scaler is okay, yeah, maximum minus minimum, and whatever data point do we have, xi minus min. Okay, so this is the formula of min max scaler. So minimum value here we have 2. So for the first row we can only consider the first sample, which is this 4 comma avocado,
and then for the 4 it will be max minus min 2 minus 7, so 5 upon 4 to 2, so 2 by 5, which will be approximate okay, yes, so 2 by 5 will be 0.4, yes, 0.4. And then they have like avocado, dragon fruit, sapodilla and other papaya, so all are different. So इसको first मिलेगा, like for the avocado it will assign it 1, and for the rest of the values it will like assign 0 0 0, because it is one hot encoder, so it will create all the unique k unique columns. Okay, so our transform data set will look like something like this. And then one last one, here we have the scalar value, whatever we have. So standard scalar is z scale normalization. What we do in z scale normalization is we subtract the mean. Okay, so this is the mean and we divide it by standard deviation. Okay, so this is the formula of standard scalar. मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा. Whatever we get here, we can like simply write it. And okay, so okay, we have 3 more options, so 3 and then this one. So this is the correct option, I think, option A, if I'm not wrong. Like, yeah, option A is the correct option. All right, ये सबको clear है? One whole Just a encoder question here. Yes. There would be 3 zeros. Why are there 4 here? Okay, that fourth one, this sorry, this 0 is corresponding to the standard scalar one. Okay, so Okay. whatever value we get for the mean and standard deviation, we subtract and divide it by them, and for the first one we will get 0, so that's why we are having 0 here. Okay, this is for min max scalar, this is for one hot encoder. Okay, and this is for standard scalar. So these are the like how can we differentiate it. Okay, now next question, you are working on a data set containing customer purchase data. You want to segment the customers into distinct groups based on their purchasing behavior. Each data point represents a custom include features like total amount spent, number of items purchased. Okay, so like what is the target level here? Can anybody tell me? Or like do we have a target label? No. Yes, we don't have any target label. So what kind of a problem is this? Is this supervised or unsupervised? Unsupervised. Yes, Unsupervised. this is unsupervised. In unsupervised हमारे पास कोई target label नहीं होता. And in the MLP course they have like just we have just covered clustering. Okay, so this is the same like clustering. So like we have to create distinct groups based upon their purchasing behavior. So kind of if we like somehow, let's say we have some data and that data is in like, if we plot it, it is in like some kind of this format. Okay, so by using k-means clustering, which is the third option, what we can do is we can allot centroids, and that centroids can refer to like capture some part of the data, and they can create their own clusters, which is basically they can create their own groups, and we can like name those particular groups like based upon different values, let's say high, low, or something like that. Okay, that is up to us, whatever we name them. But yes, this is how k-means clustering works. A very rough idea, and this is like k-means clustering is the suitable algorithm here because it is unsupervised, plus it is like clustering algorithm, which is mainly grouping the data. And then you are building an MLP classifier for a data set. Okay, MLP classifier, what is like MLP classifier? Well, मैंने MLP classifier exactly तो बताया नहीं किसी तरह से. Yes, शंकर. लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? It is k-means clustering. I think it is. Yes, it is k-means. सपोर्ट वेक्टर मशीन नहीं आएगा? No, support vector machine नहीं है. See, यहाँ पे हमारे पास टारगेट लेबल नहीं दिया हुआ. We don't have the target label कि
उसकी वैल्यू प्रिडिक्टेड लाइक टारगेट वैल्यू होगी क्या एग्जैक्टली. ओके, वी जस्ट हैव टू क्रिएट ग्रुप्स. ऑलराइट, अगर हमारे पास टारगेट लेवल दिया होता ना तो लीनियर रिग्रेशन नहीं होता, डिसीजन ट्री एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन बोथ विल बी द आंसर्स. ओके, अगर हमारे पास टारगेट लेवल दिया होता. सो यस, देन दिस यू आर बिल्डिंग एन एमएलपी क्लासिफायर. सो एमएलपी क्लासिफायर पता है लाइक आप लोगों को. ओके, perceptron maybe. yes, it is a perceptron. It is actually a neural network which has various perceptrons which we call them as neurons. Okay, so yes, if you want to like check what is neural network in detail and all, you can watch my latest session, last session, which is intro to deep learning. So there I have covered everything of neural network. So MLP classifier is just a neural network which is for classification. Okay, in scikit-learn we have neural networks in two forms, MLP classifier or MLP regressor. Then you are building mainly these two. We also have other kind of like neural networks mainly. Okay, you are building an MLP classifier for a dataset with large number of features. The goal is to predict whether an online user will purchase a product based on their browsing behavior. You're trying to decide the appropriate number of neurons in the hidden layers of the neural network. Which statement about adjusting the adjusting the hidden layer sizes parameter is correct? Okay, hidden layers पता है सबको क्या होती हैं in the neural network? Anybody knows what are hidden layers in a neural network? The part where every weight something changes inside input and output layers. Yes, Anything except for the input and output layer is a hidden layer. yes, you are right. So the like we have to adjust the hidden layers mainly. So increasing the number of neurons will always lead to better model performance. Well, that is not exactly correct. Okay, sometimes it happens, sometimes it doesn't. And decreasing the number of neurons, again it is not. Decreasing the number of neurons in hidden layers reduce the model's capacity to capture complex pattern. Yes, if we decrease the number of hidden layers, or if we decrease the neurons in hidden layers na, then also model will not be able to capture that much complex patterns. Like, But the answer is wrong. yes, answer is okay, answer is wrong, that is okay. Then the third one, the number of neurons in hidden layer does not significantly, well, it affects obviously. Finding the optimal number of neurons is a trial and error process and may require experimentation. Yes, this is correct. This is correct, right? Yes, this is correct. It is similar to what we do in hyperparameter tuning. Okay. Like हम different neural networks create करते हैं and we do the cross validation mainly in different like using different neural networks. हर एक neural network का अलग अलग architecture, like किसी में कम layers हो गए, किसी में ज़्यादा neurons, ज़्यादा layers, ऐसे ऐसे करके we find the best neural network mainly. Normal अगर छोटे मोटे हों there, if you are building a very huge model, um, that is where MLT comes in. So इतना ही. How does agglomerative B, the clustering? option is wrong. Yes. The Reducing second number and fourth both are correct, right? Yes, second and fourth both are correct. If okay, this is MCQ. Fourth is more correct here. Second is like okay, second is also correct. Well, I won't say कि second correct नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम neurons कम करते हैं in the hidden layer, so it will eventually like lead to capture less number, like capture less patterns. Okay, so ज़्यादा मतलब patterns देख नहीं पाता. If you know like if anybody knows how CNN works, तो उसको idea लग जाएगा. So like how it works exactly. Then how does agglomerative clustering handle outliers? Agglomerative clustering, I don't know what is it. Anybody knows? It is somewhat. Yeah, please go ahead. Nandan. Yeah, you can. Okay.
विघ्नेश Somehow आप ही बता दो. hierarchical clustering. Okay. I mean, it Okay, will keep hierarchy. updating something like that. Mm-hmm. All right, all right. So how does agglomerative clustering handle outliers? So it ignores outliers during the clustering process. It assigns outliers to the nearest cluster. It creates separate clusters. So it removes. Okay, so I don't know exactly. Maybe this can Nearest be. cluster should be. Okay, Also, the next question gives us the answer to what is agglomerative clustering. okay, that is great. Agglomerative clustering. Question उल्टे पूछ लिया इन्होंने वैसे. But that is fine. Hierarchical clustering technique that starts with each data point as its cluster and merge the closest cluster iteratively. Okay, all right. A method for partitioning data into predefined number of clusters. Okay, that is, I don't think that is correct. A clustering algorithm that uses centroids to iteratively assign data points to clusters. So this is k-means, okay, which like uses centroids. Then dimensionality reduction technique that projects data. This is PCA. ये तो सबको पता होगा. A is the correct answer here, right? Then, what initialization method is best in k-means? Okay. Yes, Shankar. Directly you can like speak. हाँ, इसके ऊपर वाले का क्या है आंसर? This one हाँ, ये answer यस is यस. B. Yes, it assigns outliers to the nearest cluster. ओके. Okay. Now, what initialization method? See, बहुत सारे methods होते हैं. एक तो normal like k means में एक normal method तो मतलब what we do is we either go with the random initialization. That often works, but sometimes it won't work क्योंकि randomly it creates centroids. So कहीं भी centroids बन सकते हैं. And weighted initialization में okay, I don't know exactly like okay, weighted initialization as it is written, so maybe हर एक cluster के लिए कुछ weight होगा या something like that. But mainly k means plus plus is the best initialization technique which people prefer. It is also like it is less efficient. Random initialization is kind of more efficient, we can say, because in k means initialization what we do is we check the distance as well as we find the probability like okay, एक छोटा सा मैं okay, it's not working here, what I'll do Telegram. Yeah, so what happens is in k means plus plus, let's say okay, बहुत बड़ा हो गया, बहुत ही basic है. Like this we have various data points, let's say like this, and if we like try to create some cluster, let's say if we have like created these clusters somewhere like these, okay, so first like at first it will like compute the kind of you can say distance. तो distance तो जैसे हम normally k means में computes and उसके base पे nearest like उसके हर एक centroid के nearest जितने भी data points होते हैं by distance it computes and it assign them like a centroid and creates a cluster something like this. Let's say एक cluster create हो गया. After that what it do is okay, not even in that, what it do is exactly जैसे ये 3 clusters हैं, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कौन सा क्लस्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसे कम डिस्टेंस में कितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स कैप्चर कर सकता है. ओके, सो दिस इफ वी सी दिस कैन इजीली लाइक अगर इफ वी ट्राई टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो out of all these, so it will capture maximum number of the clusters. It will have the like very low probability, it will have very high, it will have somewhat in medium. Same for this as well and same for this. So like it computes the probability as well and it like sorts the clusters, sorts the centroids mainly so that we can get the relevant cluster. So this is why it is somewhat inefficient, like expensive to
run, but yes, this is the best method. Because probability का it tries to capture कौन सा data, like data point के बहुत ही, you can say, better way में optimization it do, kind of. Okay. K means clustering. What does inertia attribute represent? So inertia is like sum of square distances. So like for each cluster it will find the distance and it will like simply square it and sum it. So the inertia for this cluster will be something, for the inertia of this will be something, and inertia for this will be something. So ऐसे करके we have the inertia, which is sum of square distances. Okay. Then you are using a decision tree classifier from sklearn.tree to build a classification which of the following is most accurate. So depth of the tree will always must be, so decision tree classifier most accurate regarding the parameter. So always be always must be less than or equal to max depth, while the tree dot max depth attribute retrieves the depth of the actual tree. Okay. Always must be less than equal to the max depth. Yes, whatever max depth which we provide, it is like it should be like, it tries कि maximum depth उतनी रहे या उससे कम रहे while building the tree. Setting minimum sample split to a value greater than 2 can prevent the tree from splitting on features that have minimal influence, but this guarantees that all leaf node will contain fewer samples. No, this is not correct. Like minimum sample split अगर ज़्यादा बड़ा है, so I don't like, this does not like guarantee कि जितने भी लीफ नोड होंगे उसमें बहुत ही कम सैम्पल्स होंगे. Some might have more क्योंकि we have like minimum sample split is more than 2. Criteria entropy. The parameter means that the decision tree will split nodes to maximize information gain, while tree dot impurity retrieves the impurity of the root node. Okay. The class weight parameter is set to balance have balanced classes. This is not correct. Like okay, somewhat it is correct. I'm not sure. Okay, what are the correct answers? Like, The first one is correct, I think. okay, the first one is correct. Yes. Okay. This is, I don't think this is correct. The last one. This is not correct, of course, and the maximize information gain. Tree will split nodes to maximize information gain. Tree underscore dot impurity. This I don't know exact property, so I can't like say exactly. Maybe they या नहीं, but yes, if we have criteria as entropy, then it like it uses information gain as well, and it splits the nodes basically. जो भी feature, it chooses that feature which has the maximum information gain. So okay, you are aiming to optimize an add a boost classifier that uses a decision tree. You decide to use in the given parameter grid search CV and learning rate, while the other are for decision tree classifier. Which of the following set of parameters is most comprehensive? Okay. Okay. So you decided to set a scalar dot model selection parameters and estimator and learning rate. Okay. So grid search CV may have, and we have like decision tree as a estimator. And estimators and learning rate. This we have to set, right? And estimators and learning rate. This is not correct. Like, okay, I haven't tried add a boost. What do you guys think? Like, आपने करा होगा, आपको पता होगा. Which one is the correct? This is not correct. Like the C one, I can be sure of. D is correct. Okay, D is correct. So, all right. So estimator.
आई थिंक एस्टिमेटर जो है, जो एडाबूस्ट क्लासीफायर में एस्टिमेटर पैरामीटर होगा, so yes, that is why it will be the, like, it is the correct option. We can check in the scikit-learn docs as well, उसमें हमें वेरीफाई हो जाएगा. So yes, given the following code for bagging classifier with k neighbors classifier. Okay, which of the following statement is correct? No, ऐसी बात नहीं है. Bagging classifier uses like various classifiers. Each base KNN will be trained on the entire data set. Okay, so here we have max samples as 0.5, which means कि maximum samples जो भी आएंगे for like the estimator for the k nearest neighbors, k nearest neighbor classifier, it will be 50% of whatever we pass in. Okay, as in like जब बैग क्लासीफायर डॉट फिट करेंगे, सो जितना भी हम डेटा पास करेंगे उसका 50% इट विल कंसिडर. सो यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द मैक्सिमम 0.5 parameter means each base estimator in the ensemble is trained on 50% of the training samples. The ensemble will use sequential computation due to n jobs equals -1. Yes, that is also correct. Like, okay, not sequential, sorry, it will do parallel computation. N jobs is -1, so parallelly it will consume all the cores of the CPU, so it will do parallel computation, not sequential. So C option is correct. Okay. If n jobs was something else, then what would have happened? Okay, n jobs as like n jobs -1. Okay, यहाँ पे नहीं, I would use this one. So n jobs -1, if we said, that means it will capture all the cores. Like does if we have, let's say, 4 cores in the CPU, so it will use all 4 cores. If we set n jobs to some parameter, it will use like that number of cores only, mainly. That is the, you can say, like, right explanation as much as I have used. Okay, so it will like use only that many cores and it won't use the rest of the cores, so jitne bhi honge. If we pass in like some big number, maybe that can throw an error. Let's check. And jobs is scalar. Okay. I think we should search in the docs of that very. All right. Scikit-learn docs ऊपर there होंगे. Okay. Okay. And jobs run in parallel. None means 1 unless job dot parallel concept -1. Okay, -1 is using all processor, that is fine. See glossary, job lib, context. Okay, glossary, if we see, for n jobs below -1, okay, and GPUs +1 Param, like yes. we need to remember all these things, parameter, every parameter. Well, not every parameter, but like most used parameter we can say. Like n jobs we use, random state we use. Okay, well, random state doesn't matter. Random state is easier, one of the easier things. Yes, like verbose ko we don't have to remember. Warm start we have to remember. Okay, because warm Max start iter, we use. learning Yes. rate. Yes, that kind of like way most used जो parameters हैं, which you have often sees in GAs, n term, the not n term, the mocks or quiz 1, quiz 2. वहीं I पे would like say PYQs. yes, PYQs all mainly PYQs के base पे Actually, we get them. what I would say is कि PYQs are your learning data set. You are the ML model, हाँ. and the test will be the N term or quiz exam. yes. And let's see किसकी सबसे ज़्यादा accuracy होती है. So yes, you are I hope using we do not overfit.
That is the main thing. So that's why like we are using solving PYQs mainly and of Yeah, different solving PYQs ensures we will not underfit underfit. at least. Yes, not underfit and also like not overfit. Agar like PYQs have the distribution is same, right? Mainly of the Yeah. weeks. So that's what. Okay. You are using random forest classifier for a multi-class classification. You want to ensure diversity amongst the trees to avoid overfitting and increase robustness. Okay. Overfitting हमें avoid करनी है. Random forest classifier है. Increase robustness. So it means our model should be like very well it should generalize very well. So overfitting avoid करने के लिए यही है. Set n parameters, the estimators whatever you have, don't set it to very higher value. Okay, so increasing the value of an estimator, setting max feature to best setting, no, this is completely opposite we can say. Setting higher value, no, again we cannot set higher value. अगर जितनी ज़्यादा higher value which you set, it will use that much decision trees. Okay, so that will eventually like lead to overfit at some point. So that's why setting max step to none and minimum sample split to 2, that is not correct. Like if you set max step to none, then it will go till until very end of the like tree. And minimum samples leave, this is also not correct. Setting, yes, the first one is correct if I am not wrong. Setting an estimator to 10, setting like some optimal value of n estimators and max depth, and using criteria entropy basically ensures we have like use the information gain mainly. So information gain is basically root node से जो next node हम बनाएंगे child node, उसमें और like इसमें कितना benefit हमें मिल रहा है, kind of like how much accurate that node is compared to the root node. So that is the information gain. So this is the correct option. Okay, not this. In the non-marked, we have to, yeah. Why C? Setting max sample That size. is the same question that I had, Like and I still do not have the answer. if we set an estimator to high value, it will always overfit. Like बहुत सारे मैंने examples देखे हैं. We even get 90% accuracy on training, but we won't even get like 60% or 70% accuracy on validation side. I think ये wrong mark हुआ है. Option A is the correct option. किसी और के पास like कुछ है for this, like why C is correct? Any explanation? All right. I think, yeah. What is the solution for overfitting? To have less constraints regularization? No. जितनी ज़्यादा regularization हम करेंगे उतना मॉडल कम overfit होगा. Okay. So to have more constraints, this is MSQ. Yes, MSQ ही आएगा ऐसे type of question में. Delete a significant portion of data. No. Increase the data set size. This is like the, you can say, solution for overfitting. And for underfitting also, like we can increase the data set. Like अगर हमारा let's say हमारे पास 100 samples हैं, we have कोई भी हम data model use करते हैं, तो it will like underfit kind of वो अच्छे से that much भी like okay tree base पे different होगा answer but not in the general. So yes, and उसमें हमें less regularization भी करनी पड़ेगी for the underfitting. So this and this C and D is the correct one. Yes, C and D. Select all the correct options. The more the SGD iterations, the lesser the fluctuations in training error. Okay. C and D ki B and D. Sorry, B and D, not C and D. Also, More. one more thing. What do we mean by more or less regularization Okay. or constraints? Like regularization is like alpha parameter which we pass mainly in whatever like linear regression or other models. So what it do is like you know cost function जो हमारा होता है, जो the cost function which we have, which is the mean square mainly, mean squared error.
like y minus y hat squared. So this is the cost function. In cost function, it adds one more parameter. So the ridge, yes, ridge adds absolute, like we have alpha. If I add here alpha and n is basically number of features, and it basically uh, takes the absolute value of the particular feature, and it uses the alpha parameter. So जितनी ज़्यादा alpha parameter की value होगी ना, उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, like it will eventually give us a very high error. Okay, ज़्यादा error होगा. तो जितनी ज़्यादा alpha parameter की value होगी, जितना high error होगा, that means let's say this is how a gradient descent works, right? Error अगर ज़्यादा तो यहाँ पे होगा. So okay, sorry, not jitni zyada, jitni, okay, I'm saying opposite. Yeah, let's say हम यहाँ पे हैं, we have to reach somewhere here. So this is our like end goal, and alpha parameter जितना ज़्यादा होगा, we have to minimize this whole gradient descent, sorry, whole cost function. Cost function को minimize करने के लिए जितनी बड़ी value आएगी इसकी, like जितना we can say, okay, it works in inverse manner kind of. Yes, so जितनी छोटी वैल्यू होगी ना, सो कॉस्ट फंक्शन भी लाइक उतना उतना एरर कम होगा काइंड ऑफ समवेयर हेयर लेट्स से. तो यस, बट जितना बड़ा मल्टीप्लायर होगा काइंड ऑफ, तो एरर भी बड़ा होगा. एंड देयर लाइक एरर बड़ा होगा, सो इट हेल्प्स लाइक टू आइडेंटिफाई कौन से फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होंगे ना, उन पे ऑटोमेटिकली लाइक इट विल एंड अप टू समथिंग लाइक हियर लेट्स से रिच टेंड्स टू जीरो. रिच जो है जीरो कर देता है डायरेक्टली, एंड लासो जीरो डेसिमल में करता है, लासो नेवर टेंड्स टू जीरो. आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलवेज गेट zero features. Okay, yes, sorry, lasso makes zero, ridge like tends to zero. Ridge will never make the coefficients zero, not the features, the coefficients, it will never make them zero. So it means कितनी ज़्यादा हम importance दे रहे हैं किस feature को. It basically find the important features mainly. Okay, then select all the correct options. The more the SGD iterations, the lesser the fluctuation. Well, that is correct. Okay, we cannot say directly correct because fluctuation occurs, fluctuation depends upon the learning rate, not on the like iterations mainly. More iterations require more computation time, that is correct. The TOL parameter restricts the number of iterations performed. Well, this is half correct, half not correct. Okay, indirectly it restricts, but we cannot say like it do. Training error might not consistently decrease while performing SGD iterations. No, जनरल केस में ऐसा नहीं होता, ट्रेनिंग एरर डिक्रीज ही होता है. माइट नॉट कंसिस्टेंटली डिक्रीज, कंसिस्टेंटली. ओके, वेल मॉडल ट्राइज टू कन्वर्ट, सो यस इट डू डिक्रीज. अगर हम लर्निंग रेट बड़ा रख देंगे देन इट वोंट, बट यस आई थिंक बी एंड सी आर करेक्ट, आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, इसमें ABCD चारों करेक्ट है. चारों करेक्ट. आई थिंक ये माइट नॉट जो लिखा है ना, वो दैट इज इम्पोर्टेंट हियर. माइट नॉट वर्ड्स के साथ, ठीक है. Okay, the more the SGD iterations, lesser the fluctuations. Well, fluctuations depends upon learning rate, not the iterations. Like अगर हमारा लर्निंग रेट ही बड़ा हुआ तो डजेंट मैटर कितनी ज़्यादा iterations है, मॉडल विल नेवर कन्वर्ज. आई डोंट नो लाइक हाउ दिस इज करेक्ट. मैं तो ये 2 मार्क करके आता. वेल, ओके, एनीबडी हैव लाइक रीजंस फॉर दिस? Maybe more iterations, more learning.
Okay, more iterations means more learning. See, it will, I'm just assuming. okay, कुछ ऐसे वर्क करता है ना ग्रेडियंट डिसेंट. लेट्स से यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके नीचे जाएगा. जितनी ज़्यादा इटरेशंस होंगे इट विल लाइक, अगर आइट्रेशंस लेट से 5 सेट करी तो यहीं पे जाकर रुक जाएगा. अगर ज़्यादा होंगी तो यस इट विल गो देयर. बट लाइक हाउ इट, द लेस फ्लक्चुएशंस, सो फ्लक्चुएशंस ओनली हैपन्स व्हेन वी हैव हायर लर्निंग रेट. अगर लर्निंग रेट बड़ा है तो ऐसा कुछ लाइक हमारे स्टेप्स आएंगे काइंड ऑफ, एंड दैट विल लीड टू फ्लक्चुएशंस, नॉट आइट्रेशंस. लाइक आई डोंट नो एग्जैक्ट, कुछ भी हो सकता है. MLP. I asked Meta and it has given this explanation. I'll read it out. Mhm. SGD is an iterative optimization algorithm Mhm. that updates the model's parameters using a single example or a small batch at a time. Mhm. As the number of SGD iterations increase, Mhm. uh, training error decreases. That is SGD right. converges to the optimal solution, reducing the training error. Okay. Fluctuations in training error decrease with more iterations. The model's parameters become more stable and the training curve becomes smoother with fewer fluctuations. Okay. This is because more iterations provide a better estimate of the gradient, leading to Yes. more accurate updates. Got it. Got The it. model has more opportunities to learn from the training data, reducing the impact of noise and outliers. Okay. So let's say if we start from here, we have to go here. Okay. कम iterations होंगी. लेट्स से लर्निंग रेट एक नॉर्मल रखते हैं. ओके. सो ऐसे से कम आइट्रेशंस होंगी तो एक टाइम पे जाके यहाँ तक आ जाएगा. एंड जितनी कम आइट्रेशंस है ना, लाइक लेट्स से कि लर्निंग रेट इज नॉट कांस्टेंट. ओके, लेट्स अज्यूम दिस लर्निंग रेट इज़ नॉट कांस्टेंट. सो अगर आइट्रेशंस ज़्यादा हैं तो ओके, कम है आइट्रेशन सो इट विल लाइक स्टॉप एट सम टाइम, दैट इज़ फाइन, दैट वी नो. अगर आइट्रेशन ज़्यादा होंगी तो ओके, ट्रेनिंग एरर जैसे वो पहले यहाँ पे रुक गया था बट इट विल गो मोर एंड मोर. एंड एक टाइम पे ऐसा हुआ कि यहाँ पे इफ आई लाइक ओके नॉट डायरेक्टली, ऐसे करता हूँ लाइक जैसे जैसे हम नीचे द स्लोप विल, जैसे जैसे स्लोप विल टेंड टू जीरो ना, द ग्रेडियंट्स विल बी लाइक वेरी स्मॉल एंड ट्रेनिंग एरर बहुत छोटा होता जाएगा. दैट इज मे बी द फ्लक्चुएशंस विच इट इज लाइक टॉकिंग अबाउट. जैसे यहाँ पे इफ वी सी द स्टेप्स आर वेरी स्मॉल, so it means जो fluctuation है like the difference in this and this, the training error difference in this and this is very small, so the less fluctuation is there. Maybe that's the like explanation. This is what I have understood. बाकी I don't know exactly, maybe यही होगा. fill in the missing parameter. अच्छा, ये लास्ट टाइम पीपल उन लोगों ने ये तो किया होगा ना, मतलब प्रोटेस्ट तो कुछ किया होगा ना, अगर उन लोगों को कुछ गलत लगा होगा तो वो शायद डिस्कोर्स पे होगा. डिस्कोर्स पे होगा, राइट. So we can find that out later. Yes. Okay, to classify the data, kernel, lasso, linear, RBF, scale, which are correct. 2 and 3 are 100% correct. One is also correct, like अभी जो आया training error might not consistently because of might not. Okay, this is also correct. Like अगर यहाँ पे always होता ना, it doesn't, या like ऐसे concrete होता, then we can say like it is not correct, but it is like might not. If it was does not consistently, yes, does not होता तो it will like it will be incorrect, but yes, this is correct. So all 4 are correct except this. Okay, is to classify the data. So classify the data, I think स्केल तो नहीं है, कोई लासो भी नहीं है, लीनियर एंड आरपीएफ. यस, लीनियर है. ये तो हमारे पास आया भी था ना क्वेश्चन क्विज में. yes. Then which of the following statements are true?
k neighbors classifier will with low values of n neighbors complex produces complex decision boundaries with low values of n neighbors produces smooth decision boundaries and true. So k neighbor classifier, the scale of the feature can impact the decision boundaries. Okay, so this is true. Like the scale of the features obviously impact the decision boundaries कि कितने decision boundary like kind of कितने ज़्यादा को cover कर पाएगी अगर scale छोटा होगा तो it will like cover more kind of data points we can say for a plus like that particular neighbor. What do we mean by scale? Scaling, feature scaling. Oh, got it. And with low values of n neighbors produces complex decision boundaries and okay, yes, I think both are correct. अब मैं भूल गया. A and C. Yes, with low values of produces complex decision boundaries. Okay. Sorry, not both. दोनों पे low values है यहाँ पे high value है. Okay. Low values of n neighbors produces complex decision boundaries. Well, ये तो normal है. We can like visualize also something like this. If we have, let's say, whatever data we have, something like this. So okay, kind of okay, मैंने mix कर दिया. यहाँ पे green बना लेते हैं, यहाँ पे orange बना लेते हैं. So अगर like k equals to 3 है let's say, तो एक तो यहाँ की decision boundary तो बन जाएगी. यहाँ की decision boundary कुछ ऐसे बनेगी and बाकी यहाँ की ये रही. ठीक है, k equals to 3 है. अगर k equals to let's say 6 हो गया, सो मान लो एक डिसीजन बाउंड्री यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई और ऐसे ऐसे करके विल हैव लाइक स्मूथ डिसीजन बाउंड्रीज. बट जब 3 था ना, सो इट हैज़ लाइक हियर यू कैन सी it is very kind of complex decision boundaries. It tries to predict as much, like it tries to improve the accuracy kind of कि जितने ज़्यादा same samples हो पाए, it tries to get them. So yes, this is the reason mainly. That is fine. Which of the following options are correct regarding regularization? It is a technique used to minimize the adjusted loss function and avoid overfitting. Okay, yes. It helps in increase the bias of a training model. It determines the rows to be selected. Elastic, okay, ये तो आप सबको पता ही होगा. Okay, is the C option correct? C option, this one. Well, this is MSQ. C option is not correct. Okay, rows नहीं determine करता. It determines the columns. Okay, like which are important features mainly. It is a technique which used to minimize the adjusted loss function and okay, sorry, this is not correct. Avoid overfitting, not underfitting. Okay, it like half is correct and half is not correct. So yes, whole is not correct. It helps in increasing the bias. This is also not correct. This is correct. Okay, bias. Sorry, not intercept wala bias. Bias of a model. Okay, bias. How can I? Okay, एक ना bull eye diagram होता है. Bias and variance. If I'm yes, here. Have you guys like seen this? Okay, बहुत ही rough image आई है. Bull eye diagram of bias and variance. Images. Yes,
सो सी बायस क्या होता है, बायस इज लाइक ओके, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, बहुत इजी है, हमें कंफ्यूजन हो जाती है। बायस इज लाइक जितना हाई बायस होगा ना, पहले हम लो वेरिएंस को कंसिडर करते हैं। वेरिएंस तो आप सबको पता है कि हाउ मच डेटा वेरीज, ओके। सो अगर हाई वेरिएंस होगा तो डेटा ज़्यादा वेरी करेगा, लो वेरिएंस होगा, ओके, दिस इज फॉर द हाई वेरिएंस, एंड लो वेरिएंस होगा तो डेटा एक स्मॉल काइंड ऑफ यू कैन से ग्रुप पे रहेगा, मतलब बहुत क्लोज रहेगा, ऑल राइट। एंड बायस मीन्स कि वो कितना ज़्यादा लाइक दूर है या कितना ज़्यादा दूर है। बायस यू कैन से काइंड ऑफ ओके, नॉट एग्जैक्टली द स्टैंडर्ड डेविएशन, बट काइंड ऑफ कितना दूर है फ्रॉम द एक्चुअल, लेट्स से वट एवर द टारगेट विच वी आर गेटिंग। लेट्स से जो हमें हाउस प्राइजेस प्रिडिक्ट करने हैं, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 100 to 500। इफ़ आर मॉडल इज हाई बायस ना, मान लो इसका एवरेज हमारे पास है, लेट्स अज्यूम एवरेज हमारे पास 250 है ऑफ द ट्रू वाई लेबल्स, ओके, ऑफ हाउस प्राइजेस, बट जो हमने प्रिडिक्ट करे उसका एवरेज जो आया है इट इज़ लेट्स से अराउंड 450। सो इट मीन्स आर मॉडल इज बायस्ड, ओके। मतलब वो हमारा मॉडल एक्चुअल जो रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यूज है, उससे थोड़ा सा मतलब उससे काफ़ी दूर है। सो दैट इज़ व्हाट हाई बायस मीन्स। सिमिलरली यहाँ पे भी हाई बायस, यहाँ पे हाई वेरिएंस भी है, सो डेटा वेरीज ऑल्सो, ओके। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। इससे लाइक ये बुलाई डायग्राम इज़ वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायस एंड वेरिएंस। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, वेल काफ़ी लोगों को पता भी होगा। So it helps in increasing the bias of the model. Yes, regularization helps in okay, increasing the bias. No, it helps in decreasing the bias. Fourth option is correct only. Why? Okay, why is the option? Regularization increases bias slightly because it prevents from fitting data too closely. Okay, all right, all right. Okay, so B and D here are correct. This is to we all know from the starting. Which of the following techniques are used in decision tree to make decisions or to measure the quality of split? Okay, entropy, not ROC curve, entropy and cross entropy. Okay, not cross entropy. Um, Entropy and Gini impurity. Cross entropy is the loss function. So option is A and D. Yeah, A and D is correct. Which of the following approaches are useful for? Actually, for the question before the last, wo, Mhm. with high regularization, bias will be high, and that may lead to underfitting. With very Mhm. low regulation, bias will be low, and that may lead to overfitting. So Mhm. neither too high nor too less regulation Yes, is of what course. gives the Right. That is of course like ज़्यादा regularization भी नहीं better, कम भी नहीं. Okay. Kind of a medium. That's why we like do hyperparameter tuning on the regularization parameter. Okay. Find a good value for k. ये तो सबको पता होगा. Elbow curve and yes, that is it. इसका तो elbow curve ही होगा आंसर. Okay, floating. What is this? ये किसी को पता है? Shillot coefficient. I don't know what is it. हाँ बट इसको यूज करते हैं, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना शायद उसको होती है। Okay. आइडिया। All right. मैंने like देखा नहीं कभी. Okay. ठीक है, ए एंड सी आर करेक्ट है, ये तो सबको पता ही होगा, एल्बो कर्व से होता है. Then in which of the following scenario the split will not be made at node n? Okay, no, node n. So the data set here, test files and all the things. Okay,
10 number of samples at node n if it is split. Okay, then it can split such that two samples. Okay, no, ये तो होगा नहीं, two samples in left child because minimum sample if is 3. Okay, and minimum sample split is 5, तो 5 से कम होंगे तो तब भी possible नहीं है. This is not possible, the last one, and this is also not possible. These two are possible and minimum sample split MSQ है. Yes, these two are correct, B and C. Okay, will not be made at node n. Yeah, sorry, opposite कह दिया मैंने, इतना बड़ा नोट लिखा फिर भी. A and D are like correct here because of node. अगर if they made it, so that means these two only possible, these two options will made it. Why? Because it is satisfying these criteria: minimum sample split 5, minimum sample leaf 3. Okay, यहाँ पे लीफ 2 है एंड यहाँ पे एक ये 1 है एंड यहाँ पे सैम्पल्स भी 4 है, सो दैट्स वाई. स्केलर, मैक्स एबीएस स्केलर, ये तो सबको पता होगा. मैक्स एबीएस स्केलर, just that the formula is there. This is the formula, like x of I, okay, sorry, x of I divided by max, yeah, max ABS of x. This is the formula and we can like get the maximum value also we can get here. 1 होगी I think, if I'm not wrong. 0.5. okay, -4, -4 and then okay, -4 है तो माइनस, यहाँ तो -1 आ गया. ठीक है, यहाँ पे आएगी 0.52 पे, दैट इज फाइन. नाउ दिस वन. सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. इस पे लाइक व्हाट we can do is we can like plot the data. Okay, so the x is given here, so let's plot the data. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. okay, so 1 1 1 1 is something here, and okay, 10 11, let's say 10 11 will be somewhere here, मान लेते हैं. and 5 5 5 5 is here, and then 25 18. okay, 25 18, so that will be somewhere here, let's say. and then 1 -1 that is here. we extend it, so and इसके 0 1 0 1 0 0. okay, so this is 0, this is 1, okay, not, this is 1, this is 5 5, right? 5 5 is 0, and what about this 25 वाला, this is 1, this is also 1. so हमें जो है हाईएस्ट एक्यूरेसी बतानी है परसेप्ट्रॉन क्या अचीव करेगा. ऑल राइट, so How did you mark them 1 or 0? from here, like यहाँ पे दिया हुआ है ना y की वैल्यू. for the 1 1 it is 0, for Okay. 10 11 it is 1. Got it, got Yes. it. now highest accuracy perceptron है, so okay, I think ऐसी लाइन बन जाएगी, right? and it will simply classify, so it will misclassify this one. These, like, it will classify this as 0, this as 0, this as 0, this as 1, and this as 1. okay, so ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. this is incorrect, so 4 out of 5 samples are correct. and accuracy is, ये कैसे डिटरमाइन किया, क्या 0 करेगा क्या 1 करेगा, ओके, क्लासिफायर? मतलब जैसे यहाँ पे ये प्लॉट हुआ था ना, इफ वी सी इट अगेन, तो एक नॉर्मल सा लाइक
मेनली हमें लाइन देखनी है, राइट, लाइन हमें डिटरमाइन करनी है। तो लाइन ना हम उस पर डिटरमाइन ऐसे कर लेंगे जहाँ मैक्सिमम सैम्पल्स लाइक वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैम्पल्स हम लाइक एक्यूरेटली वी आर एबल टू डिफ्रेंशिएट। तो अगर मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ तो सिर्फ एक ही हो रहा है, राइट, हियर द एक्यूरेसी इज 20, राइट। तो हाईएस्ट एक्यूरेसी यस, जहाँ भी होगा हाँ, वहां ले यहाँ अगर लेंगे। मैं करूँगा सो एक्यूरेसी यहाँ आएगी मेरी कुछ आइदर लेट्स से 40, या 40 विल बी द हाईएस्ट एक्यूरेसी, बिकॉज ये दोनों करेक्ट होंगे, ये इनकरेक्ट होगा। ओके, नॉट 40, सॉरी 60। एंड इफ आई डू हेयर तो ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट, लाइक जितने भी इस साइड वाले हैं ये 1 क्लासीफाई होंगे, इस साइड वाले सारे 0 क्लासीफाई होंगे। सो दिस इज ऑल्सो बीइंग क्लासिफाइड एज 0, बट इन एक्चुअल दिस इज 1। सो दिस इज हाउ, बस हमारे पास काइंड ऑफ एक प्रिडिक्शंस आ गई है, and then we can easily compute the accuracy, which is 0.84/5. Also, what is that reshape -1 1? reshape -1 1, okay, माइनस मतलब हमें एक डायमेंशन पता नहीं, 1 मीन्स लाइक हर एक जो, ओके हमारे पास डेटा स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है 0 1 0 1 1, राइट। वी हैव टू रीशेप इट समहाउ कि जब हम मॉडल में फिट करते हैं ना, सो वी वांट कि ये सारा एक एक इट बिकम्स अ कॉलम वेक्टर, इट इज़ लाइक अ रो वेक्टर एज ऑफ नाउ, राइट। तो रीशेप -1, 1 फॉर द टारगेट लेवल इट विल मेक इट एज अ कॉलम वेक्टर, समथिंग लाइक दिस, लाइक हर एक एलिमेंट के लिए एक एरे बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। Okay, got it. ऐसे करके पूरा बन जाएगा, ठीक है। so this is using the confusion matrix precision score for the label class 0 again precision score होता है कि out of all the positive predictions how many are actually positive, right, this is the प्रेसिजन में P आता है और इसके सारे Hmm. फॉर्मूला वाले में भी P आता है. That is how I remember it. yes, that is also like a way. So if I like paste it for the label 0, so 0 0, this is the true positive, right, we can consider it as a true positive. Out of all the positive predictions how many are actually positive? This is the true label, this is the predicted label, true and predicted. So 3 by 6 and 8. yes 3 by 8, so whatever it is वो आंसर आ जाएगा हमारा, yeah 0.375, that is the answer. Okay, and this one, ये तो मैंने अभी देखा था ग्रुप में, किसी ने पोस्ट भी किया था, Gaussian NB, then okay, Gaussian NB is for like date, we can say okay, Gaussian NB regression के लिए था, no, okay, sorry, where the data is normally distributed, and then estimator dot class underscore prior gives the prior of labels. Okay, what is the prior probability of label being no, that is like y equals to no. So prior basically like it is prior probability, it is asking ये हमारा टारगेट लेबल है, ठीक है। यहाँ पे प्ले गोल्फ, इस पे लाइक प्रोबेबिलिटी दे आर आस्किंग कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेबल बीइंग नो, तो जितने भी नोज हैं उनमें से एक्चुअल लाइक कितने नो हैं एग्जैक्टली, सो 1 2 3 एंड 4 एंड सैम्पल्स 11 0, ओके 4/12, 1/3 इज द आंसर, तो सामने से ही हो गया, ओके 1/3. Then this, what is the output of the following code? K neighbors classifier. All right. इसको भी हम plot कर लेते हैं. So for plotting it, what we will do? Let's have this. 2 3. So 2 will be here, 3 will be somewhere here. This is 1, 5 6. So 5 and 6. It is again somewhere here. And 10 11, okay,
वापस से कुछ ऐसे 15 16, तो लेट्स से कुछ ऐसे and 20 21. All right. So somewhere like here कुछ ऐसा है and डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। yes, distance formula so we can also predict 8 and 9 we have to 8 and 9, like 8 and 9 will be somewhere here. If I like use this one, so okay, इसका हमारा है okay, if I write it we have 0 1 1 1 2, okay, and neighbors are 3, so that means 3 nearest neighbors it will consider. If we try for these, इसका डिस्टेंस तो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा. इफ़ वी ट्राई फॉर दीज, यहाँ पे डिस्टेंस सही आएगा. नहीं, And फर्स्ट 3 का डिस्टेंस सही है। आई एम सॉरी, फर्स्ट 3 का डिस्टेंस. ओके ओके ओके, हाँ ठीक है. वैल्यूज़ भी थोड़ी छोटी मैंने अच्छे से लाइक प्लॉट नहीं करा. सो यस, डिस्टेंस यूक्लिडियन दिया हुआ है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से वी कैन कंप्यूट इट. वैसे तो दिख ही रहा है 3 नेबर्स, अगर हम नियरेस्ट नेबर्स एज्यूम भी कर लें, सो अगर ओके इफ़ वी टेक द डिस्टेंस तो हमारे पास कुछ ऐसे ये वाले नेबर्स आ जाएंगे 3, सो मेजॉरिटी इज़ 1, दैट्स वाई 1 इज़ द आंसर. ओके, What if weights were not uniform? weights were not uniform. Okay, I well, exactly I don't know. Let's check weights in KNN. Okay, a nearest neighbor, but also how close or far they are. Weight. Okay, so weights are not uniform, मतलब हर एक डेटा पॉइंट को कुछ वेट दिया हुआ है. तो काइंड ऑफ यू कैन से लाइक एक हमने जैसे ग्राफ में वी हैव राइट shortest path we have to find, and we have some weights as well in the graph. Similarly we have here also weights, so weights are also being considered with the metric. So जिसका weight सबसे कम होंगे with the metric whatever we have, that and उस पे जो majority होगी that will be the answer. So this next is this. Okay, यहाँ पे we have a lot of things. Iris data, polynomial features, degree 3, feature union है. So मतलब इन दोनों के जो भी फीचर्स बनेंगे that will be the result. So polynomial transformation, इसके फार्मूला है ना, मुझे फार्मूला एग्जैक्टली याद नहीं. इंटरैक्शन फॉल्स है, इंक्लूड बायस फॉल्स है. What was the answer? Last question. Answer for this is 1. Okay. For this one, स्टार्टिंग पे ओके आइरिस का 150 एंड 4 है, तो 4 फीचर्स है. एन कंपोनेंट्स 2, मतलब 2 तो होगा. एंड दीज 4 ऑल्सो वर देयर आर देयर, एंड द रेस्ट डिग्री 3 तक जितने भी फीचर्स हमारे बनेंगे. इसका फॉर्मूला था ना, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जस्ट लाइक मैं नॉर्मली पेयर से बना लेता हूँ. D plus P. Sorry? D plus P CP. ओके, आप लिख दोगे, मतलब समझ नहीं आया. In the chat box. कॉम्बिनेशंस हमें निकालने हैं मेनली. बायस के लिए तो सिंपली 1 हम कर सकते हैं, दैट इज फाइन. डी प्लस पी प्लस सी, ओके, डी प्लस पी सी पी, इज इट? Yeah. ऑल राइट. एंड यहाँ पे 2 तो होगा. डी इज द लाइक द एक्चुअल फीचर्स विच वी हैव, एंड देन पी, ओके, 3C3.
+2। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे इसका बस हम कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 फैक्टोरियल एंड या 3 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सो यस फॉर्मूला लगा के हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। 7 फैक्टोरियल। सॉरी 7। ओके, p is the degree, right? P Yeah, yeah. is the degree. I And think P P is is the power. Degree, yeah. ओके, वेट, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, सॉरी। Is it PCP or is it D plus PCP? D plus PCP. ओके, ये है, ऑल राइट। तो यहाँ पे तो ये होगा ना 7 choose 3, Yeah. 7 choose 3 plus these two. ओके Including bias. ओके, दिस इज इंक्लूडिंग बायस, सो -1 कर देंगे, है ना, बिकॉज इंक्लूड बायस हेयर इज फॉल्स, सो -1 कर देंगे, बायस तो एक ही होगा हमारे पास। ओके, थैंक यू गाइस, अभिषेक एंड श्रुति। Okay, so 36 will be the answer. Here we can compute. Then, okay, explained variance ratio. इसका एक ने like someone has shared the shortcut. See, variance ratio. This is basically PC. PC आप सबको पता है, हमें पहले डेटा को सेंटर करना पड़ता है, right? And सेंटर करने के बाद we have to create one matrix. मैं नेम भूल गया. Coefficient matrix something like that. एंड उसके बाद आगे करना पड़ता है, बट नॉर्मली सेंटर करके ही हम देख लेंगे। शॉर्टकट यही था कि जिसका सबसे ज़्यादा, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, फिट ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो ऑफ 0। तो अगर हम इसको सेंटर करें, व्हाट इज़ द मीन, 1 -2 -2.5, so -1.5 divided by 3 -0.5 is the mean, and 603.5, 9.5 divided by 3, mean is 3, and अगर हम इससे -1 -1.5 कॉमा, ओके, -2 -2.5 कॉमा -0.75, ऑल राइट। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लाइक क्या था, कुछ तो एक शॉर्टकट था ग्रुप में, अगर लाइक किसी ने बताया था, आई विल लाइक लेट यू नो। वेल, एक वे तो नॉर्मली सबको पता है कि पूरा मैट्रिक्स बना के वे कम लाइक वी क्रिएट एन यूज द लैम्डा एज वेल, एंड मैं भूल गया काफ़ी, तो MLT में वी डिड इट, राइट। मैट्रिक्स बनाते थे, मैट्रिक्स फीचर मैट्रिक्स हम बनाते थे, एंड उसके बाद उसमें हम वी फाइंड द आइगन वैल्यूज़, एंड उन आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर्स ढूंढते थे, एंड उससे आता था आंसर। सो जो भी आइगन वेक्टर काइंड ऑफ लाइक covering the most area, kind of we can say, that will have the highest ratio. इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट लाइक आई विल लेट यू नो इन द, लाइक मैं ग्रुप में डाल दूंगा देख के। क्वेश्चन लेबल, दिस इज इट, ओके। राइट, प्रिडिक्ट, सो ओके, यहाँ देख लेते हैं, ये भी वापस से वैसे ही व्हाट वी हैव डन हियर, 0 0 0 0, तो एक पॉइंट यहाँ पे, ओके, लेट मी यूज द पॉइंट्स विद द ब्लैक, तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया 0 1, so another point will be somewhere here 1 0, और sorry 1 0 not, okay 1 1 भी है, ऑल राइट, ये सारे हैं, एंड इसका ओके, लेट मी यूज ब्लू, 0 0 0 एंड इसका 1 है, ओके। तो इसके तो बहुत इजीली डिसीजन बाउंड्री बन रही है ना, लाइक लाइन बन रही है परसेप्ट्रॉन की, समथिंग लाइक दिस, है ना।
we are easily able to classify the data. So accuracy, okay, now predict करना है 2,2 को, so it will be somewhere here, तो इसके भी 1 ही आएगी क्लास. यस, 1 इज द आंसर. ये तो बहुत इजी था. आई होप सबको लाइक क्लियर होगा. एंड देन दिस वन, based on the data, answer the given question. Log 13, 15 maths to English. Okay. Index is 11 to 15. Okay, index 11 to 15 है. So log है 13 to 15, तो लास्ट की 3 रोज आ जाएंगी. That is ब्रजेश, चारू, दीपक एंड ऑल. एंड मैथ्स से इंग्लिश का लेना. ओके, तो हमारे पास ये आएगा 11, 12, 13, 14. ओके, यहाँ पे 15 दिया हुआ. 11, 12, 13, 14. So yes, 56, 77, 66, 82 will be equivalent. All right, equivalent code पूछ रहा. So I log 2,3, 1,2. Yeah, this is correct. And 2 to 4. This is also sorry. एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे ऑल राइट, तो लेट्स डू इट. हमारे पास हमें जो है ये ऊपर डेटा दिया है df.log करके. df.log, let me zoom out a little. df, sorry, df.log, and we have 13 to 15 and maths to English. Okay, this will result in a data frame something like this. यहाँ पे मैथ्स होगा, यहाँ पे इंग्लिश होगा. एंड 13 to 15 मीन्स जो इंडेक्सेस है हमारे 11 to 15 जा रहे हैं. एंड हमारे पास 4 रोज है. ओके, 11, 12, 13, 14, दीज आर द रोज. सो 15 ऑब्वियसली लॉग है इनफैक्ट, बट मैक्सिमम हमारे पास 14 है, तो लास्ट वाले 2 आ जाएंगे. दैट इज 56 एंड 77 and 67 and 82. Okay, अब this we have to fetch from others as well. This we done via log, and जो original data set होता, that is something like this. Name, sorry, name and maths, English and Hindi. मैं मैथ्स के हिस्से पे लिख देता हूँ 34, 43, 56, 77. ओके, इनके इंडेक्सेस कुछ ही है 11, 12, 13, 14. एंड नॉर्मल इंडेक्स देखो इंटीजर वाइज, तो डाटा दीज आर दीज इंडेक्सेस. ओके, तो हमें बस डिफरेंट वेज से करना है. अगर आई लॉग से करेंगे, वी वांट दीज टू लाइक इनका आई लॉग से इफ वी डू, तो पहले कॉलम देख लेते हैं. इट विल बी 1 and 2. ओके, अगर हम लिस्ट में पास करें तो ऐसे, अगर हम ऐसे स्लाइसिंग वाइज पास करें तो आई लॉग में लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं होता. आई एम श्योर. एंड इंक्लूडेड इन आई लॉग एक्सक्लूडिंग. ओके, एक्सक्लूडेड, या. सो 1:3 करेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 0, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है. देन यहाँ पे वी हैव टू फेच दीज वन लास्ट. सो यहाँ पे या तो हम 2,3 कर लें, या तो हम यहाँ पे कर लें 2 से लेकर 4 तक. ओके, 2:4. सो बोथ आर द ऑप्शन नंबर this one and option this, A and C are correct. Yes, A and C are correct. Okay, now this option. So ये तो just they are adding it. 13 comma English, log 13 comma English. तो 13 हमारा यही वाला है एंड इंग्लिश, तो ये 67 है. 67 में इट इज एडिंग 0,3. ओके, 0,3 this one. 67 plus 53. Okay,
6 6 12, so 120 is the answer. That is fine. Apply and unique, तो apply type and unique. Okay, हिंदी पे हमारे पास 3, तो इसका जो इज द आउटपुट एंड यूनिक, या 3 इज द आंसर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा टाइप्स हैं हिंदी में। अगर देखो, एक इंटीजर, एक नैन, एंड नैन इज बेसिकली फ्लोट, and this is also a null value, and this is string. Okay, so 3 unique data types. Type निकाल रहे हैं, type के unique types basically it is finding. Then this one, okay, ये तो हम like कर सकते हैं threshold वगैरह like डाल के. So df equals to drop na, number of rows will decrease in the data set. Okay, 23 t3. गाइस अभी तक लाइक सही क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे हैं? मैं इन सबको कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा? आई होप लाइक क्लियर होगा. आई थिंक एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला है. डैट स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, डैट जो ट्रेनिंग वाला था. यस आई थिंक याद भी नहीं है अभी. हाँ कोई नहीं. Go to okay. the iLog question. Mhm. Yeah, This one? yeah. Show me your explanation the notepad. Okay. How did you do 2,3 and 2,4? Okay, 13 कॉमा इंग्लिश सी. पहले मैं यहाँ लिख के लेता हूँ. इट इज़ आस्किंग 13 इंग्लिश प्लस आई लॉक में इट इज़ आस्किंग 0 to 3, 0 और 3. सो अगर डेटा हम देखें तो ये रहा. इंग्लिश पे इफ़ आई राइट 23 45 67 82, सॉरी 45 67 एंड 82, एंड ये जो है ये मेरा 13 इंग्लिश पे ये वाली आ जाएगी वैल्यू, राइट. 67 वैल्यू यहाँ पे आ गई. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट 0,3, विच मीन्स 0th रो एंड थर्ड इंडेक्स. ओके, थर्ड कॉलम मेनली दिस वन. सो हिंदी का 0th वाला है 53. ओके, तो 0,3 यहाँ से ये आ गया, and 53 plus 67, which is 120. Okay, is it clear? Yeah. Okay. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, दोनों इंडेक्सेस लिख लो. एक तो जो दिए हुए इंडेक्सेस वो भी, इंटीजर इंडेक्सेस भी लिख लो, कॉलम एंड रो के, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डेटा फ्रेम बना लिया वैसे कर लो. बाकी तो इजी है, बस देन वी जस्ट हैव टू सी द डेटा. Now this question, suppose we have 100 samples, each sample x are 50. Okay, so 50 वो है 3 hidden layer, the first hidden layer contains. Okay, इसका भी formula होता, well we have 100 comma 50 and the neural network has 3 hidden layers. The first hidden layer contains 80 neurons. How many parameters does the first hidden layer will have? Okay, has a bias also. So एक तो 50 तो हमारे पास हो जाएगा, sorry not 50, 80 and plus we have 50 features, तो हर एक पे 50 जाएंगे, हर एक 80 पे. So it is 50 into 80, which is 4000 plus 80, which is 4080, and 1 वाला कहाँ से आ रहा है? How it is 4081? This is a SC system command question. No, this is not system command. Yeah. What? That ends at there, that page. वही ना, that is not system command. यहाँ पे ये अलग है. This is MLP यार, this is not Below system MLP, MLP starting below. What? तो ये कौन सा है? ये MLT है फिर? Maybe, MLT. हाँ.
MLT, okay, leave it then. Well, I don't know, हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो था हमारे पास, लाइक आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, 408 MLP मैंने में भी है। करा था। हाँ MLP में भी होगा, बट लेट्स सी। ओके, व्हाट डज ग्रुप बाय ऑपरेशन डू इन लाइक अबव कोड? ओके, कैटेगरी के बेस पे वी आर फाइंडिंग द एवरेज प्राइस। बहुत इजी है ये तो। वी आर ग्रुपिंग द डेटा बेस्ड अपॉन कैटेगरीज, एंड हर एक कैटेगरी का जो भी प्राइस आ रहा है उसका हम एवरेज ले रहे हैं, सो इट कैलकुलेट्स द एवरेज प्राइस ऑफ ईच कैटेगरी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन। स्टैंडर्ड स्केलर, ये तो कर लोगे आप लोग, फॉर्मूला यू गाइस लाइक वी ऑल नो। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ, दैट इज मच बेटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रिक्स इंडिकेट हायर देयर वैल्यू बेटर द रिग्रेशन मॉडल परफॉर्मेंस? RMSE, ऑफ कोर्स नॉट RMSE। यह जितने भी मीन स्क्वायर्ड एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सारे नहीं, जितनी लो वैल्यू होगी उतना R2 का है, राइट? यू ऑल नो माइनस इन्फिनिटी टू 1 है ना, इज द रेंज, or am I saying it wrong? Yeah, minus infinity to 1. So 1, if the value is, अगर R2 score 1 आ रहा है किसी मॉडल पर, that means that model is 100% perfect. Okay, based upon the data whatever we have. Which of the following variations of can be implemented with SGD? So stochastic is the correct answer. If we set like maximum batch size also, then we can set these as well, but the stochastic is the correct answer. Okay, if we see also, yeah, This was in quiz 2 mocks as well, I think. yes, ये उसमें था, right? Consider the ridge regression represented by ridge class. That okay, ridge regression is correct. Ridge regression is designed to handle class imbalance, no regularization term, sum of absolute residuals. Yeah, that is correct. Increase the value of regularization parameter makes the model less sensitive to high magnitude coefficients. No, equivalent to regularization parameter is, no, this is not correct. This one is correct. Is this MCQ? Yeah, B option is correct. Okay, why not B? The regularization term is added to the, ओके ओके, सॉरी सॉरी, रेगुलराइजेशन टर्म जो है वो कॉस्ट फंक्शन में ऐड होती है, नॉट द सम ऑफ एब्सोल्यूट रेजिडुअल्स। कॉस्ट फंक्शन मीन स्क्वायर एरर होता है, नॉट द मीन एब्सोल्यूट एरर, सो दैट इज द डिफरेंस। ऑल राइट, increasing the value of regularization parameter in ridge regression makes the model less sensitive to high magnitude coefficients. Okay, या सो रिज जो है डेसिमल्स में, लाइक जब भी हम रिज रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं, लास्ट में अप्लाई करते हैं, इट ट्राइज टू कन्वर्ट द वेट्स टू ज़ीरो। ओके, एंड रिज बेसिकली टेंड्स टू डिक्रीज द वेट्स। सो अगर किसी के बहुत ज़्यादा वेट्स है, लेट्स से 200 समथिंग एंड एवरेज लेट्स से अराउंड 10 है, तो उसका वो कम करके ट्राइज टू लाइक reduce it to let's say 50, 40 and something like this. I'm just giving you a very rough example. So yes, this is, मैंने गलती से इसको इग्नोर कर दिया। Okay, now which of the following method is used to estimate the probabilities? Predict proba, this is the correct. Well, ऐसी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। Yeah, predict proba. Why is it relevant to add a pre-processing step to scale the data using standard scaler when working with k-neighbor classifier? Faster to compute the, okay, is this MCQ? K-neighbors is based upon computing feature needs to be normalized to approximate equally. Scaling has a negligible, no, this is not correct. This is also not correct. This is correct. Okay, feature needs to be normalized to contribute approximately equal to the distance computation. So अगर हमारा डेटा स्केल्ड होगा ना, तो हम जो डिस्टेंस वगैरह भी हम कंप्यूट करेंगे एंड ऑल द लाइक मैट्रिक्स, द वे इंक्लूडिंग द वेट्स एज वेल, तो हम मतलब बहुत बेटर डिसीजन बाउंड्रीज बना पाएंगे, काइंड ऑफ स्मूथ डिसीजन बाउंड्रीज बनेंगी। लाइक आई नो स्मूथ डिपेंड्स अपॉन द हायर ऑफ वैल्यू ऑफ के, स्टिल
like it will be easily able to distinguish the samples more easily. So that is the correct answer, option B. Now this one, when using count vectorizer, what does max feature parameter control? Okay, I have not used it. The maximum number of features to be extracted. I think this is the correct answer. Like max feature, maximum number of features to be Yes. extracted. Yes, this is the correct. Characters, no, characters नहीं, randomly selected feature ये भी नहीं, documents consider, no, ये भी नहीं. This is the correct answer. बहुत basic है ये तो count vectorizer का. Which of these may not help in handling overfitting? Depth of the tree, increasing the depth, it will not handle, it will not help us in like handling the overfitting. अगर हम pruning increase कर देंगे तो यस, ये काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गेन की तरह है. प्रूनिंग इंक्रीज कर देंगे तो अगर कुछ की वैल्यू बहुत कम प्रूनिंग होगी तो वहाँ पे वो रुक जाएगा. वेल, डी ऑप्शन आई थिंक इज द करेक्ट. मिनिमम सैम्पल स्प्लिट. okay, not, sorry, not. So this helps, this also helps, this also helps. This doesn't help, I think. Increase the value of pruning parameter. No, depth. Okay, if we increase the depth it will not. Oh, sorry. उल्टा कह दिया. अगर डेप्थ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो मॉडल विल, ट्री विल टेंड टू ओवरफिट. ओके, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी. सो अगर डेप्थ इंक्रीज करें तो इट वोंट हेल्प, इट विल डू द ऑपोजिट, इट विल इंक्रीज ओवरफिटिंग. Clustering methods, centroid based, that I know. Like answer is all of these. Like the density base is also there, I know. So all of these is the answer if I'm not wrong. Yeah, all of them. You are working with a large image, want to group similarly colored segments in the image together. No other information is provided. So ये तो आप लोग भी बता सकते हो, मतलब it is very easy, right? What should be the answer here? Let me, like, these two are incorrect, the last two. या तो supervised या तो unsupervised. What do you guys think? Supervised होगा, unsupervised? Yeah, it is unsupervised because there is no other information is provided. We have to group similarly colored segments in the images. So we आज का say, पहला क्वेश्चन भी इसी से सिमिलर yes, डिस्कस किए थे. right. So consider x and y, what will be the output? Okay, MLP regressor, activation function, logistic. Okay, all right. Random state, out activation. Okay, regressor है. Logistic will be the, I think, out activation. Out underscore activation is the for output layer, right? It represents that, if I'm not wrong. Name of the output activation function. Okay, we have regressor, but this, so logistic होना चाहिए because we have passed logistic, but regressor है, doesn't matter that. Okay, identity, let's check for this. Yeah, name of the output activation function. Okay, activation function is identity. If it is logistic, this is for the hidden layer.
ऑल राइट, ओके ओके, आउट का पूछ रहे हैं, सो आउट का आइडेंटिटी इज द आंसर। आइडेंटिटी, ओके, आइडेंटिटी किसी को पता है लाइक आइडेंटिटी क्या है? ओके, आइडेंटिटी डायरेक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे होता है, लाइक इट डजंट, जो भी यहाँ से पूरी न्यूरल नेटवर्क से जो आउटपुट आएगा, इट जस्ट डायरेक्टली गिव्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू एज द आउटपुट। ओके, logistic is the sigmoid function, ReLU is 0 comma max, and then it's just like using kind of sigmoid but in a more, But why is the answer identity? answer is identity because it MLP regressor है, regressor like we are we have a neural network which basically results in a okay, which basically results in a continuous variable, and continuous variable पे like if we see here like out activation, name of the output activation function, okay, see, normally तो these all, if I show you, well, ReLU logistic regression जो है, it is the sigmoid, okay, sigmoid we all know it is for the probability, same in same way ReLU is also for the probability, like sigmoid की जो like range होती है, that range is 0 to 1, ReLU की range होती है 0 से लेकर infinity, एंड आइडेंटिटी तो डायरेक्टली जो हमारे पास जो भी न्यूरॉन से कंप्यूट करके हमारे पास टोटल आएगा ना, like wx plus b directly, which is the linear activation function, whatever we get here that will be the answer directly, and tan h की रेंज होती है -1 to 1, so that is also comes under the like for the, that is also we use for the classification problem, so -1 to 1 is the range here, 0 is this, not that, yeah, so range matters, identity की range मतलब वो जो domain is the range directly what we are passing. Now simple imputer, ये तो सारे कर लोगे right? Missing values is np nan, okay, this is easy, I don't think इस पे कुछ दिक्कत आएगी. In statistics, okay, it will give us the mean value for each of the feature, okay, so first वाले feature की mean value यहाँ पे आएगी, second की यहाँ पे, third वाले column की यहाँ पे. Yes, this will be uploaded in the YouTube. Then this one, standard scalar and SVC, scalar with mean classifier, okay, CV pipeline, assume that extend and Y-train are training feature matrix, and label vector correspond uh, which of the following statements about the given code is true. So the grid search will give the accuracy on the by 4 folds, okay, not 4 folds, we have like CV equals to 5, so it will consider the 5 folds. Scalar with mean, okay, is being used for the always be a radial based, no, this is incorrect, this is also incorrect. For the standard scalar this is correct, MCQ है क्या? Yeah, this option is correct. A total of 18 combination, a grid search CV 2 4 and 9 36, no, not 18, B option is the correct, yeah, B option. Then leave one out, for the leave one out, which of the following code represents correct methods to obtain cross-validated performance measures using leave one out, okay, by default leave one out if we set here, okay, this gives us the like this gives us the score, okay, that is fine. Leave one out, not this won't, obviously this is different. Then a shuffle split and split 5, no, not this one. Okay, we have not defined leave one out here, so that's why in this one, okay, MCQ है क्या? Yeah, A option is the correct, yes.
क्योंकि ये पे वी हैव डिफाइंड लीव वन आउट and we are using here. यहाँ पे we are using leave one out, but we have not like created any instance, so that's why. Consider we want to train a neural network. On the training, data has 5 features and single output. The estimator has one hidden layer. A total of 71 parameters are learned. Missing attribute, hidden layer sizes. Okay. 71 parameters are learned. Okay, weights including bias. Okay. So कितने न्यूरॉन्स होंगे, दे आर बेसिकली आस्किंग. वन हिडन लेयर है, दैट इज फाइन. Then answer will be 1 or 3. Sorry. I think one answer होगा या फिर 3 होगा. Okay. 71 पैरामीटर्स है इंक्लूडिंग बायस, तो 5 तो बायस ही हो गए हमारे. ओके, नॉट 5, सॉरी. 5 फीचर्स हैं. We have a layer. We don't know how many neurons are there. We need to find the number of neurons, and total of 71 parameters we have like uh, here. So I think 71 minus 5 if we do divide by 5, because हर एक पे not 13. Okay, 71 comma 1. वेल हिडन लेयर तो 1 है, तो एक से ही हो जाएगा. Hi Parampreet, is it necessary to get 45% in N term in order to pass the course? No. Even if Please someone got check the 10 grading marks? document actually. I'll do that. Yes. Anthem पे we do not have any kind of criteria. Okay then. Total, right? Total only. Yes. Yeah, T score. Okay then, thank you. Okay, इसका किसी को पता है like how will we compute? This is something new for me as well. 5 features and single output for each sample, that is fine. Okay. Estimator has one hidden layer, right? तो one hidden layer है and total 71 है, तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता. क्योंकि 71 न्यूरॉन्स एंड एक और न्यूरॉन तो बहुत ज़्यादा होंगे. आई थिंक ऑप्शन डी और सी, लाइक 50 प्लस 10 60. नो. ओके, if it is 10,2 but hidden layer तो 1 है ना, that is like something weird. C is the correct. Okay, 10 is the correct, so hidden layer size is 10. That means यहाँ पे 10 neurons हैं. Like in the layer, 5 features we are passing into each and every neuron, and that means 5 into 10, 50 plus हर एक neuron के साथ we are getting a bias term as well. 50 plus 10, 60. How 71? आउटपुट लेयर का भी इंक्लूड होगा. How? Okay, I'm not able to get it. कोई like anybody knows the solution for this? No.
ओके 10 इज द आंसर. चैट जीपीटी पे डाल के देख लेते हैं एक बार. लाइक data has 5 features, one hidden layer for a neural network and a single output for each sample. Estimator has total of 71 parameters, weights with bias. What will be the value for hidden layer cycle from below? 71 comma y. 10 and 10 comma 2. That is correct. The number of bias is okay. Total parameter is 71. Weights plus bias 5 into h plus h. This h is for the number of bias, and weights between hidden and output layer. Okay. ये h कहाँ से? This is for the output layer. Okay. ये output layer का भी include कर रहा है. Okay. This is why we are getting. Okay. So ठीक है. Got it. मतलब यहाँ पे 10 न्यूरॉन्स है, तो 10 हमारे पास आउटपुट आएंगे फॉर द आउटपुट लेयर. तो 10 हमारे पास टोटल आएंगे. एंड यहाँ पे 60 तो आ गए. 60 प्लस 10 मोर फॉर दिस वन फॉर आउटपुट लेयर ऑल्सो, लाइक WX plus B if we consider. So like 5 into 10 plus 10. This is for the bias and plus 1. Okay. This is for weights of hidden layer. This is the bias for hidden layer. This is the weights for output layer. This is the bias for output layer. So then we will get 71. Okay. Output layer का I was like मैं भूल गया था. Okay, you are building an MLP classifier for a dataset with large number of features. The goal is to predict whether a patient is going to have a Parkinson disease in the next 12 months. Hidden layers decrease the number of neurons. ये तो हमने क्वेश्चन पहले भी करा था. This is the correct. Options are same, but Yes. The question has Question is changed. Yeah. Which of the following elbow graph values taken? Correct snippet for to plot the elbow graph. Okay. इन्होंने प्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया था. ओके. सो के मीन्स से हमारे पास एक एक आ रहा है एंड 1 to 11. सो 1 to 10 ये वाला तो रह जाएगा. दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ये दोनों करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि रेंज इस पे 1 to 10 चल रही है. डैट मीन्स टोटल 9 आएंगे. नहीं, हमें 1 to 10 चाहिए. सो दिस एंड दिस वन. अब देखते हैं. इनर्शिया एल्बो मेथड MCQ है. ओके. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ऑप्शन में वही वो मुझे देखते समझ हैं. नहीं आ रहा. लाइन बाय लाइन देखते हैं. यस. एक पे इंसर्ट है, एक पे अपेंड है. ओके. हाँ, तो ये वाला रॉन्ग है ना. इंसर्ट पे वी हैव टू पास द इंडेक्स फर्स्ट. सी ऑप्शन इज द करेक्ट. यस. थैंक यू. Okay, now next question. You are working on a binary classification using the MLP classifier. You decide to increase the alpha parameter
ओके इंक्रीज कर रहे हैं टू कंट्रोल अंडर फिटिंग। ये क्या गलत क्यों लिखा है यार, क्या मतलब अल्फा पैरामीटर अगर हम इंक्रीज करेंगे दैट इज द regularization हाउ। okay, the following code snippet is the application by setting changing how you are affecting the neural network, increasing the model making the model C option। MLP क्लासिफायर पे पहले हम देख लेते हैं होता क्या है फॉर अल्फा, कहीं ये ना हो कुछ उल्टा ही कंसिडर कर लो। strength of the L2, okay, the L2 term is divided by the sample size when added to, okay, L2 regularization, yes, so adding a stronger, अगर हम increase कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया अल्फा पैरामीटर की वैल्यू, ओके पहले 0.01 थी, अब हमने 0.001 थी, अब 0.01 कर दिया। तो क्या होगा, इंक्रीज द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी टू फिट द डेटा सेट डेटा ट्रेनिंग डेटा मोर क्लोजली, एडिंग अ स्ट्रॉन्गर regularization term to the loss function. This is the correct option. Option B, I'm not wrong. Okay, option C, making the model more capable to learn more complex behavior. Okay, so यहाँ पे with this we can identify यहाँ पे अल्फा की वैल्यू स्टार्टिंग पे लाइक अगर हम ऊपर वाले देखें तो यहाँ पे काफ़ी कम है, अल्फा की वैल्यू कम है एंड इट इज़ लाइक नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दैट मच। देन जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है इट इज़ लाइक एक्सपैंडिंग अल्फा की वैल्यू एंड ओके सो लर्न मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उल्टा नहीं है आंसर लाइक I don't think this is the answer. I'm not sure for this. Making the model more capable to learn more complex behavior. Okay, no, not sure. Then this the following code produces an output of 0.9125 if we increase the max depth value. Okay, आउटपुट हमारे पास ये आ रहा है, मैक्स डेप्थ अगर हम कर देंगे वाई ट्रेन एक्सट्रेन, ओके इस पे है। तो क्या लगता है अगर मैक्स डेप्थ हमारे पास 2 है देन हमारे पास 91% एक्यूरेसी आ रही है। अगर हम मैक्स डेप्थ इंक्रीज करेंगे ट्रेनिंग पे वी आर कैलकुलेटिंग द स्कोर। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, will it overfit or underfit? It will obviously like it will overfit, okay, it will overfit the training data and output score is likely to increase. Yes, likely to increase. MCQ shape of the feature matrix and labels, ठीक है, what will be the predicted class for x01? Given code above, okay, this is voting classifier and voting is soft. Soft voting में it is like they consider the average, right? So average of this is average of this plus average of this, so 0.69, we like simply 0.4 plus 0.25 plus 0.9, 1.55 divided by 3 and okay this is 51, so next वाला ज़्यादा होगा 0.6 plus 0.75,
plus 0.1, 1.45 divided by 0 answer. okay, answer is 0. Yeah, answer should be 0. Answer is 1. एवरेज देख रहे हैं ना हम, सो ओके, मैं कुछ गलत किया क्या यहाँ पे? wait, let me check. Hardwood versus hardwood. मैक्सिमम लेते हैं ना, I think only वेटेड वो एवरेज लेते हैं फॉर द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज, नॉट द मैक्सिमम, वेटेड एवरेज. तो वेटेड एवरेज ओके. मीन्स जिसका वेट मैक्सिमम आएगा एवरेज वेट वो शायद आंसर होगा. सो वेटेड एवरेज मीन्स हम ऐसे तो फिर like we should multiply the class labels with the average. I'm not wrong. Let's check. Probabilities we get, average the probabilities that we have done, and final prediction with the highest average probability. So 0 should be the answer, na? Like highest average probability तो इसकी आ रही 0.4, 0.25 and 0.9. मे बी क्वेश्चन रॉन्ग, आंसर रॉन्ग होगा. हाँ, आंसर रॉन्ग होगा, ये हो सकता है. लाइक आई डोंट थिंक आंसर रॉन्ग होगा यहाँ पे, क्योंकि 0 आ रहा है आंसर. गिवन द following code bagging classifier with k nearest neighbor. Okay. Which of the following statement is correct? Due to weights equals to each rate or neighbor equals. Okay. The ensemble will consist of 3 base knn classifier. No, 30 है, 3 नहीं है. MCQ है. Okay. Above code uses bootstrapping to generate samples. No, यहाँ पे bootstrap false दे दिया तो नहीं. Model will be tested on out of the bag samples. Due to the weights equals distance, each knn classifier will read okay all neighbors equally. Okay. यूनिफॉर्म के लिए इक्वली नहीं होता. आई थिंक मॉडल विल बी टेस्टेड on out of the bag samples. Not sure about this. None of these. Okay, none of these. यहाँ पे तो अगर वेट यूनिफॉर्म होता देन इक्वली होता है, दैट इज फाइन, बट दिस वन आई वाज नॉट श्योर. नन ऑफ दिस इज द आंसर. आउट ऑफ द बैक सैंपल्स यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है. ओके, दे आर रीडिंग द डेटा, दैट इज फाइन. ठीक है. pandas data frame and chlorides at the 4th index. Suppose we are interested in extracting the value of the chloride attribute for the 3rd sample. Okay, how can we extract? ilog करेंगे तो 2,4 that is fine. Okay, और data dot chloride 2 करेंगे तब भी हो जाएगा. ऑप्शन A and ऑप्शन D and option number B as well. Yeah, ये क्लोराइड्स उसमें है, स्ट्रिंग में आई एम नॉट श्योर. ओके, स्ट्रिंग में है. या ऑप्शन A, B and D. C इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें पे नेम पास करना चाहिए ना कि नंबर. SGT क्लासिफायर है and it is like fitting the data. Choose the correct option. It applies lasso penalty. ठीक है, lasso is L1, ridge is L2. And the training may terminate after 499 iterations. After 499 iterations or lesser. ठीक है. The classifier represents a perceptron model. Okay, no, perceptron
No, the classifier's model parameter will be initialized with parameters learned from yeah, if the same object is trained fitted, okay, because warm start true है, so classifier के जो parameters हैं वो पहले वाले से ही जो like जितनी भी बार हम fit call करेंगे it will consider the previous one as well. So the last one and okay this one also MSQ, yeah MSQ is the training may terminate after 499 or lesser, मतलब 500 तक maximum जा सकता है, पहले भी ट्रेनिंग खत्म हो सकती है बाद में भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द टॉलरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग observations warrant use of SGD model. So am I audible? Yeah. Am I audible now? I think अभी mic off हो गया था मेरा. Okay. So इसमें they are asking like which of the following observation warrant use of SGD model means कौन सी like इनमें से चीज़ें हैं that in which we have to use the SGD model. So data set is 1000 GB, that is fine. बड़े data sets के लिए we use SGD gradient descent way, not the other way. Then model has to be trained in non-iterative manner. No, this is wrong. Model must be, यहाँ पे एक था कि must नहीं, might be a logistic regressor, can be. So but this option also they have given as correct. This is false. Decision tree तो नहीं होगा. So option A and option D. Yeah. Then when using a k nearest neighbor classifier, consider the following scenarios. Okay, opposite too smaller may result in model that is sensitive to noisy data. That is correct. MSQ. Last two options are correct. Okay, not last. Okay. Increasing the value obviously leads to okay. Increasing the value of n neighbor generally leads to underfitting. Yes, ये तो correct है. Decreasing the value, अगर हमारी value कम है then it leads to overfit. Like अगर decrease करें generally leads to overfitting. Will it happen? Okay, choosing a small feature for n neighbors may result in a model that is sensitive to noisy data. Yes, this is correct. अगर हम small value लेंगे तो वो sensitive रहेगा noisy data के लिए. That means it will like try to capture the complete data as much as possible. So that's why complex decision boundaries भी बनती है. And okay, this option this is also correct. Like अगर हम value decrease कर रहे हैं so it will lead to overfit. Okay, next ये वापस से सेम क्वेश्चन आ गया. पॉली एंड आरपीएफ. Select k best chi square k equals to 3. Features will be selected. Okay, हमें यहाँ से मैक्सिमम जिसका स्कोर आएगा वो हमें कंसिडर करना फ्रॉम द आर्क सॉर्ट, लाइक द 1 एंड 1 2 3 ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक maybe this one or maybe I think this one 12 9. Okay, ये तो इजी है. आर्क सॉर्ट के बेस पे हम देख सकते हैं कौन से कॉलम के साथ इंडेक्स मैच कर रहा है. दिस इज द इंडेक्स मेनली, एंड जो इंडेक्स सबसे छोटा दैट इज काइंड ऑफ द फीचर व्हिच इज सिलेक्टेड. सो k इक्वल्स टू 3 मतलब 3 मिनिमम को लेना. हम मिनिमम ही लेंगे, राइट. 12 9 6 3 1. मैग्नीशियम एंड प्रोलीन ऑल्सो. उसके बाद alkalinity. ओके, alkalinity. ओके, मैग्नीशियम एंड प्रोलीन. ओके, these two if I'm not wrong. या यही होंगे. ओके, ऑल राइट. ऑपोजिट है क्या?
we have to take maximum, sorry, maximum value, यहाँ पे maximum, okay, maximum values we have to maybe take. So 12 के लिए है alcohol, that is fine, ठीक है, alcohol यहाँ पे नहीं है, तो in x selected from x k equals to 3 है, तो एक alcohol आ गया, उसके बाद 11, so total phenols ये भी नहीं है यहाँ पे. What is the like, I'm not able to understand like आंसर क्या होगा, कैसे होगा. Okay, anybody knows like कैसे आंसर ये आ रहा है. कलर इंटेंसिटी, ओके ओके, जीरो, ओके जीरो भी है, मैंने जीरो नहीं देखा था. ओके, कलर इंटेंसिटी एंड 1 2 3 then 4 1 2 3, ओके कुछ आई डोंट नो, वियर्ड है काफी. I think this is in the first week they had this. Okay, I think not in the first week. no, first There week was में, something where they had yes yes yes. this wine prediction, wine quality prediction, something. Yeah, data set to we know, but like this one select k-best, so it is in the I think second week or third week maybe, उसमें था select k-best and okay, I'm not able to like I'm not able to understand कि exactly कैसे आ रहा है. Maybe Actually, lowest we should index को देख. make a column something on the paper and write all of these to actually understand. ओके, अभी ओके, काफ़ी टाइम भी हो रहा है, थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा लाइक आगे वाला देख लेते हैं, इतनी देर में तो बाकी भी हो जाते हैं. एसजीडी रिग्रेसर पैरामीटर्स here, ओके, and a randomized search CV and iter 10 3. All right, assume all necessary, which of the following statement, then iter controls the number of hyperparameters. Okay, the actual number of combination will be not 20. The hyperparameter search for the alpha parameter, alpha के लिए it follows a log uniform. Okay, is it MSEC? Yes, the third option is correct, the first option is correct, and the scoring metric is mean squared error. Yes, except the second option, all are correct. Yeah. Then this, it returns mainly the index. Okay, k fold, okay, not k fold, k fold, k fold. Just one thing. Someone in the group has written that in that question, which we are not able to solve, we just need to select the three features with the best scores. Best scores. Yep. Okay, highest scores. All right, got it. Okay, ठीक है, तो ओके गॉट इट. तो बेस्ट स्कोर वही हाईएस्ट स्कोर के बेस पे हो जाएगा. वेल अगर हम लिख के Yes. देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा. दैट वुड बी मच बेटर. Okay, now Yes. it returns like extrain. Okay, extrain and end split 3, so splits will be total 3, train and test. अब प्रिंट पे क्या आ सकता है, के फोल्ड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, लाइक five I guess. ओके 5. Five होगा. Default value 5 होता है. ऑल राइट, तो 5 वाले जितने भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, एक यही होगा फिर तो.
n split is 3, so 3 times होगा, that we know. But 5 आने चाहिए ना, if we see. Okay, 5 आ रहे हैं, 3, this is also extrain में, ये कैसे possible? Okay, cannot be printed. All right, cannot be printed. But and 5 ठीक है, n splits 3, but what about like कितने वो choose करने हैं? 5 है, are you sure? Like लग नहीं रहा जो आंसर है. Cannot be. Okay, cannot be. ये तो नहीं होगा बिकॉज ये तो पूरा डेटा सेट आ गया, ठीक है, डैट इज क्लियर. ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पे सेम इंडेक्स रिपीट हो रहा है, डैट इज ऑल्सो क्लियर. यूनिक इंडेक्स लाइक सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सो सेम एलिमेंट नहीं आएगा. दिस वन 47 31 18 and 95 77. Why not these above two? 41 है, 41 तो डेटा सेट में नहीं है. 41 कहाँ पे? देखो, 47 है ना? नो द थर्ड और फोर्थ ऑप्शन. Option 3 and 4. ओके हाँ, ओके यहाँ पे 41 है, ठीक है, ये तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस 47 31 18? ये सारे हैं. Weird. Okay, no worries, let's move on to the next one. बहुत weird आ रहे हैं questions. When users SVC classifier different values of the regularization, smaller values, ये तो हमारे पास उसमें भी आया था ना, in the quiz 2 में भी और in the mock quiz 2 में. Okay, smaller values of C result in more complex, larger values of C become simpler with increasing value of C. Opposite होता है ना इसमें C का, तो smaller values of C will result in more complex, larger values of C will result in more complex, yes, and very large value of C may lead to overfitting because complex decision boundary बनेगी तो obviously overfitting होगी. Tries to capture as much as, like it tries to classify as much as data points possible. Okay, extrain and all. Okay, ये क्वेश्चन तो दोबारा से आ गया. This question we know, we have done. Then this question classifier. Okay, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है 70 to 80 का, ये आ रहा है एग्जैक्ट, ये है, ये आ रहा है. एंड स्कोर प्रिंट करना है. स्कोर तो वी ऑल नो इट इज एक्यूरेसी, राइट. लॉजिस्टिक क्लासिफायर है तो एक्यूरेसी इज द स्कोर. तो 1 2 3 4 5 6 कितने सैम्पल्स हैं? 10 सैम्पल्स हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10. 60% is the answer. Yeah, 0.6, not 60, sorry. 1 decimal, yeah, 6 0.6. and ये भी वैसे ही हो जाएगा the way we have plotted earlier one. Somewhere here. इसमें आई थिंक प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, 7 नेवर लेना है तो फिर इसमें 1 मोर है. ये क्वेश्चन तो हमें आया था ना अभी, ऑलवेज आई तो थिंक. 1 ही आएगा. यस, हाँ 7 पे तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, मेजॉरिटी 1 ही है. तो 2 3 है, अगर उससे ज़्यादा होते तो थोड़ा लगता. Okay, k neighbors classifier and then k of classes. All right, 3. So the classes, all right, इस पे अभी आंसर 2 ही आएगा, आउटपुट विल बी 2. Okay, sorry, the classes of each one, like I'm confused, either the answer will be true or
3 या 2 2 classes are there 0 and 1. एक और पैरामीटर था, I forgot it again, यहीं पे देखा था. And neighbors are 3. Okay, that is fine. But 2 ही classes हैं. एन नेबर्स 3 है तो सबकी एक एक क्लास हो जाएगी, डेट इज फाइन. अगर एन नेबर 1 होता तो क्लासेस हमारे पास एक ही बनती, राइट. देन दिस वन, हाउ मेनी डिसीजन ट्री विल बी ट्रेन्ड इंटरनली. ओके, यहाँ पे तो ये रेंज ओके जा रहा है 1 to 20 कॉमा 2, सो इट इज लाइक डिसीजन. ओके, मैक्स स्टेप पे हमारी वैल्यू आएगी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 and 19. So 3 6 9 10 10 max depth values. CV हमारा 5 है, so 10 into 5 and रैंडम फॉरेस्ट है, तो रैंडम फॉरेस्ट में जितने एस्टिमेटर्स होते हैं मतलब उतने डिसीजन ट्रीज हैं. सो into 10 that will be 25 sorry 100 and 500 I think. या 500 इजी था. इतना इजी क्वेश्चन भी आता है क्या? ओके, ये क्वेश्चन तो हमारे पास आया था ना पहले, ऐसा क्वेश्चन हाँ, देखा था. Q2 के टाइम. यस यस यस, ठीक है. इसको तो हम स्किप कर सकते हैं. ओके, एक लास्ट हम देख लेते हैं फिर. पाइथन कोड ये भी सेम है. एवरेज क्वांट कैटेगरी पे एवरेज क्वांट सॉरी टोटल क्वांटिटी कितनी है हर एक कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे हम सम कर रहे हैं. दैट इज़ फाइन. यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर ये भी सेम ही है. क्या डिफरेंट क्या है, लाइक 2 3 T3. ओके, ये आफ्टरनून का है. आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि क्वेश्चन सेम हो गए. T2. ओके, ये वाला बेटर है. ऑल राइट, यहाँ पे आंसर्स भी यहाँ पे मैक्स एबीएस स्केलर दैट इज आल्सो इम्प्यूटर है एंड स्केलर है, ये तो हमने पहले भी करा हुआ है. स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे 0 की स्टैटिस्टिक्स मतलब हमारे पास यहाँ पे मीन वैल्यू आ जाएगी जो भी हम ढूंढेंगे. सो 6 4 10 10 5 15 2 3 3 इज द वैल्यू. या 3 क्योंकि इसका मीन जो है 3 आएगा. 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5, द मीन विल बी 15/5 विच इज़ 3. ये तो ठीक है, हो गया. लार्ज स्मॉल एंड ऑल. मल्टी लेवल बाइनराइजर. ओके, मल्टी लेवल बाइनराइजर लाइक 2 कॉलम्स है तो दोनों के लिए ऐसे 0 1 एनकोडिंग करेगा. सो बाइनराइजर मतलब वी विल कंसिडर कि 2 ही यूनिक वैल्यूज़ होंगी. तो लार्ज स्मॉल है तो यहाँ पे काइंड ऑफ 1 0 yeah 1 0 1 0 okay, not this one, this is okay. I think मैं डिफरेंट थोड़ा सा तो ऐसे होगा. या 1 0 1 0 ओके, इट विल बी नॉट 1 0. मैं यहाँ पे भी कुछ गलत मैंने किया. क्लासेस आर कोल्ड हॉट. ओके, ये 4 क्लासेस हैं. ऑल राइट, तो ये होगा इसके बेस पे आएगा. आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बेस पे आएगा. या यहाँ पे कोल्ड है. फर्स्ट ऑप्शन ही होगा सर. यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. कोल्ड है एंड उसके बाद हॉट नहीं है तो 0. लार्ज है 1 है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी एंड थर्ड पे एंड फोर्थ पे, ठीक है. दैट इज इजी. नेव बायस गॉसियन एनबी predict probability. What information does the predicted probability for the new data points? The posterior probability for the classes for the new data points. A is the answer. Wait, I think third. third. Yes, posterior probabilities. Naive Bayes है तो yes, ठीक है. Let's check. थर्ड या posterior probabilities. बाकी डिसीजन बाउंड्री एंड लाइक्लीहुड तो नहीं होगा.
नाउ दिस वन काउंट वेक्टराइजर, इसमें हम सिंगल वाले कंसिडर नहीं करते हम, एंड 2 सेंटेंसेस हैं तो 2 तो होगा शेप पे, एंड यहाँ पे 15 आ जाएगा आई थिंक, या ओके सॉरी, ऑपोजिट 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 2,15 लाइक 2 हमारे पास वो बनेंगे काइंड ऑफ 2D मैट्रिक्स वी कैन से, एंड उसके अंदर हमारे पास होंगे 2D एरे होगा, हर एक एरे 15 लेंथ का, 2 एरेज, एंड यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा सेट, ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंट, ये वापस से के मीन्स क्लस्टरिंग, ये भी सेम है, ओके, एवरेज लीकेज बॉर्डर्स कंप्लीट लीकेज, ऐसा कोई लिंकेज, ओके, you are working on a geographical locations and want to group similar location based on their distances, latitude and longitude coordinates for each location, which linkage method would be the most appropriate, similar location based on their distances, okay, ये तो even I don't know ये कहाँ से आया, do you guys have any idea? कॉम्प्लेक्स में ना लॉन्ग डिस्टेंसेस का लेते हैं, सिंगल में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, Okay. एवरेज में एवरेज को लेते हैं, और सेकेंड का लेते हैं। बट फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन वी विल एंड, काफ़ी देर हो गई है, ओके, you are analyzing each transaction includes you want to identify groups of customer based upon their spending behavior, most appropriate, normally distribution based ही होती है, density based तो होती है, but like normally नहीं, customer transaction data set of customer transaction histories, each transaction includes purchase amount and time step, identify groups, distribution based clustering, Yeah. okay, which of the regarding given the which statement is true regarding label encoder, encoder will contain only the values 1 2 3 4 0 1 0 1 2 3, yeah, this is correct, if element is passed it will successfully know, label encoder assigns higher integer value to more, ऐसा तो नहीं है, अगर 2 करेंगे 0 1 2 MSQ है, this one is correct, फर्स्ट एंड fourth why dog like, अगर 2 करेंगे तो ये तो फिश पे वेट, उस बेस्ड अपॉन द आई थिंक ओके इट फर्स्ट सॉर्ट द डेटा, सो बर्ड को 0 मिल जाएगा, कैट को 1 एंड डॉग को 2, इज इट सो? पता नहीं, यस दैट फोर्थ तभी होगा, दैट इज वाई फोर्थ, क्योंकि बर्ड सबसे लाइक सबसे पहले आ रही इफ वी सॉर्ट द डेटा, अल्फाबेट, which of the following estimators can be implemented, okay, SDD classifier, logistic regressor, partial fit, आई थिंक मल्टी, okay, logistic regression, sorry logistic regression, okay, multinomial NB, I have not tried, ये वही है, so like we have to check, okay, regularization ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ये भी कर लिया था, if the shape of the data is like 8 फीचर्स हैं तो उसके बाद कितने फीचर्स होंगे, डिग्री यहाँ पे 2 है, बायस फॉल्स है, एंड कंपोनेंट 5 है, तो ओके 5 आएगा, बाकी फॉर्मूला लग जाएगा कॉम्बिनेशंस का, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा 2 प्लस 5, sorry not 5, 2 plus 8, so 10C2 right, 10C2 plus and include bias false है तो 10C2 minus 1 and plus 5,
तो जो Yeah. भी आंसर होगा इन दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि बड़ा नंबर ही Last होगा. ओके. Dummy regressor, it basically randomly shuffle the target. Main principle: predict the mean and median value, predict the sum of the input features. No? Randomly shuffle the target variable values to make prediction. Okay. Dummy regressor, sum of input. Yeah, dummy regressor है तो sum of input ही होगा. If we, okay, why not mean or median? Is it so? Well, okay. Standard scalar scale data, ठीक है. Then ये तो हम ट्रांसफॉर्म करके सिंपली देख सकते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लास वेट बैलेंस, equally important to both classes. No, it will use in regularization. MSQ है, MCQ है. Option D is correct. Yeah, option D is correct. C represents, it will apply a regularization. Scalar dot which of the give coefficients, model dot cof, ठीक है. Okay. Binary classification problem where the data set is relatively small. For the smaller small data we use SGD is for big data that we know. You want to perform L1 regularization. Newton, I don't think we can, or maybe I don't know exactly. L I believe. Okay. We are performing regularization, so इसमें शायद regularization supported नहीं है alpha parameter. तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है. ये भी सेम क्वेश्चन देखा हुआ है. MLP क्लासिफायर ये भी देखा था अभी. ओके, अब तो काफ़ी सारे सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं. कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, ठीक है. और इसका कोएफिशिएंट आएगा, ये हमारे पास 0, ये तो हमने करा था. ऐसा भी हमने करा हुआ है. ओके, अभी तो सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो लेट्स एंड द सेशन देन. लाइक क्वेश्चंस काफ़ी सारे सेम ही आ रहे हैं अभी एंड टाइम भी बहुत हो गया. सो let's end the session and thank you guys for staying till now. Abhi, like we have done around 3 PYQs as in total. Questions यहाँ पे बिल्कुल सेम आने लग गए थे. So yes, and like I am recording this session, so I'll upload the recording in my YouTube channel. You guys can subscribe to it. All right, and thank you for staying in the like session, and this is the last session of the like MLP session series. एंड उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में. और एंड ऑल द बेस्ट फॉर एंड टर्म. बाय गाइस, गुड नाइट.